So, very good evening to all. Clearly audible and visible, loud and clear. Just acknowledge in the live chat window. Everything clearly audible and visible to all. So, first of all, greetings to all. And as I greet in all my classes, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal, Kencho, Vanakkam, Shubho Shandhya, different ways of greeting in India. So, we are good to go, I think. So, what we are going to cover? What we are going to cover is a quick recap of all the important topics in the form of MCQs, all the important MCQs which can become future exam questions. So MCQs are not only MCQs, they are important topics. So my target will be to revise those important topics. So I have a basket of about more than 60 questions. So roundabout will be touching about 180 topics. Okay, so be prepared, pay full attention throughout the session, and you will find it very useful for your upcoming FMG exams. INI-CT के लिए INI-CT PYQ session has been done now, so you can go through INI-CT PYQ session held recently. It's available on DBMCI YouTube channel. Okay. So this is me, Dr. Vishwajeet Singh, your faculty for Forensic Medicine and Toxicology subject in DBMCI and eGurukul platform. So I welcome you all to the session. So what we are going to do is we are going to give a one shot to all the important areas of my subject. ठीक है? One shot का मतलब ये होता है कि एक बार में सब खत्म, शुरू किया खत्म. We will be finishing each and every important topic. Session कितनी देर का चलेगा I don't know, but around about on an average 2 hours or 2+ hours. So we are good to go. शुरू करें. You all will be answering the questions in the live chat window, but I'll be little bit quick. So I won't be giving you like time, so that we save our time for coverage of discussion of those important areas or those important topics. NEET PG wala one shot session is for NEET PG exams. That will also be handy for INI-CT exams. INI-CT PYQ session is a different session where all the important last 3 years INI-CT PYQs have been covered. And in this session, we are going to do a retro revision. Retro matlab we will be catching a MCQ and we will be revising the topic. Okay? Chalo ji. Let us start with our session. So round about you get 12 to 13 questions in each and every exam, be it PG, be it INI-CT, be it FMG exams. Round about 6 from FM area and 6 from toxicology area. So my whole aim is to make you sound, make you very strong for all these 12 to 13 MCQs. So let us start with our first question. Identify the intracranial hemorrhage shown in the image. This is the image and this is a repeat question, image based question. The moment you see such images in the exam, you should be able to appreciate few important aspects which we cover in our classes. Like this is the scalp area shown to you. The dead body is lying flat on the autopsy dissection table. And this is the skull margin. The skull cap has been removed. This is the skull margin. So what I mean to say is scalp has been removed during autopsy. Skull cap has been removed with a bone saw. The moment I remove a skull cap, what I see is a thick white structure, that is dura mater. So over here on the right side, dura mater is present, but over here dura mater is absent. The moment I see dura mater to be absent, I will be able to appreciate sulci and gyri of the brain. If dura mater is present, I will not be able to appreciate sulci and gyri of the brain. And the moment I am shown a hemorrhage above dura mater, it is going to be extradural or epidural for me. So without any silly mistake, I will be marking confidently EDH as my answer of choice. But suppose I show you the hemorrhage next time over here. Suppose the hemorrhage is shown over here in this green shaded area. The moment I see dura is absent and the hemorrhage is being shown to me,
This is going to be SDH for me, correct? It is beneath dura. The moment I give you a history that this hemorrhage was being seen when the brain was washed with water during autopsy, and then I am seeing some hemorrhages. Now we know if I wash the brain with water, which hemorrhage will wash off? Answer will be SDH. SDH will be washed out. SDH will be washed out. But which hemorrhage will persist even after washing of the brain? SH. By mistake, I marked the arrow in the SH area. Okay? So, on washing, if I am getting a hemorrhage, that means SH is there. Intraparenchymal is inside the brain matter. If I take sections of the brain during autopsy and I see hemorrhages, yes, they will be intraparenchymal or intracerebral hemorrhages. Now, this is a very important area. So, let us do a quick recap. Quick recap of all these important hemorrhages. You will be recalling with me. Okay? This will be like a one-liner revision. What are the important aspects in relation to EDH? The most common cause is rupture of middle meningeal artery. You all know. I'll be writing just the keywords. Rupture of middle meningeal artery. How much amount of EDH will be fatal? About 100 ml. This we all know. About 100 ml. It's not absolute. It's about. Then coming to associations of EDH. Yes, this is one hemorrhage which is associated mostly with a skull fracture. This is one hemorrhage which is mostly associated with in this term, lucid interval. Lucid interval. Lucid interval. What is lucid interval? The period of consciousness between two phases of unconsciousness. Okay. Most likely it is associated with EDH. Referred as an answer always over STH. This is one hemorrhage which will never cross skull sutures. Why? Because this dura mater is attached to the overlying skull bone. So yes, it is never able to cross. It never crosses sutures. And NCCT is the initial investigation of choice where I will get a hemorrhage which will be idly on CT. Idly has to be biconvex. Idly has to be biconvex on CT. Now, few important lines with regards to STH. What is the most common cause? You all know, rupture of bridging cortical veins. Then, in relation to STH, always remember this is one hemorrhage, STH, which is mostly associated with falls, frequent falls of a person. This is one hemorrhage which shows chronicity, mainly seen in boxers. So, a boxer can survive with a small SDH over a period of 10 years. And thereafter, he can get chronic boxing injuries in the form of brain atrophy, cortical atrophy. And that condition of chronic SDH is called as, try to recall the condition, dementia pugilistica or punch drunk syndrome. Boxer's fracture, you all know, fracture of fifth metacarpal. Boxer's attitude, you all know, that is also called pugilistic attitude, which leads to flexion of all the major joints due to extensive heat exposure to a person. Whether the person is alive or dead, that does not matter. What matters is extensive heat leading to coagulation of muscle proteins. And that flexion attitude is also called boxer's attitude or pugilistic attitude. So these are all the important terms related to boxers, which we revise with STH. Then coming to SH, yes, the most common cause is trauma, preferred as an answer over rupture of intracranial berry aneurysm. Correct? This is one hemorrhage in relation to SH, which we revise that yes, once a headache hota hai, thunderclap. The patient will come to the clinic and tell the doctor that I am having the worst headache of my life. Always think towards SH. And we utilize two important scaling system to grade SH. What are the names? SN Hunt scale and WFNS scale. So these are the important areas in relation to intracranial hemorrhage, a very important topic for all the exams, including FMG exams. Let us move on to question number 2. This is what we are going to do with each and every question. An insane person. Now, this is again a hot favorite topic for FMG exams. And after the end of today's session, you will be predicting the paper. And you will be amazed to see कि वो prediction आपने खुद किया and वो हो गया, सही हो गया. This is what happens. But first, you should have a sound knowledge of the subject. An insane person is not criminally responsible for his acts under which of the following section? Now we all know 84, but what is that after 84? It is IPC, IEA or CRPC. Answer goes with 84 IPC.
84 IPC was formulated by Britishers in 1860, taking into account Macnaghten's rule, which was a British case. And Macnaghten's rule was sort of formulated in the year 1843. This is a PG exam question. Macnaghten's rule was formulated in, and we know, yes, the judgment of Macnaghten's case came in 1843. We have been ruled by Britishers, so Britishers embedded this Macnaghten's rule in the form of 84 IPC, which says, let me repeat the lines. These lines actually was the question lines of one of the FMG exam session. The lines of Macnaghten's rule is, pay full attention. Nothing is an offense done by an insane person, done by a person under unsoundness of mind, when he is not able to understand two important facts. Which two facts? Nature and consequences of his act, and what he is doing is wrong or opposite to law at the time of commission of the crime, not a medical history. At the time of commission of crime, suppose due to delusion of persecution, which occurs in schizophrenia. So Macnaghten's was a case of paranoid schizophrenia because of delusion of persecution. He was of the false belief that yes, British Prime Minister is going to kill me. In an attempt to save himself, he has done the act of killing, so he got the benefit of Macnaghten's rule. This came into existence during the court proceedings of Daniel Macnaghten's case. Okay? I hope it is clear. It cannot be CRPC. It defines something. It defines the legal. This is the legal test for insanity in India. It can come like this also. This is the legal test. The battle is fought in the courts, so called as legal test for insanity in India. Also called as right or wrong test. Remember this name too. Whether the person is doing a right thing or wrong thing, he is not able to understand because of his unsoundness of mind. Correct? Let us move on to next one. Now this is again a hot favorite area. What are the different odors of the poisons? The correct answer to this question will be cyanides. To get odor of any poisoning case, during autopsy, which body cavity is opened first in any poisoning case? Always remember, in any poisoning case, first to open is always head. We open the skull first because the odor of the poison is nicely contained in the closed cranial cavity. Okay? This can become a separate question. Now, what are the different odors which are important? Let us do a quick recap. So, how we revise the odor of the poisons? Let us write alphabet A and B and then GKRS in a sequence, just like GPRS cell phone. With A comes acrid pear-like odor. This goes with chloral hydrate, preferred as an answer over paraldehyde. Chloral hydrate preferred as an answer over paraldehyde. Then another A for acetone apple-like. Acetone apple-like odor goes with chloroform and ethanol. So alphabet A is done. Come to B. B for bitter almond odor. This goes with cyanides. That is usually a repeat question of many exams, not only FMG exams. Then comes burnt rope odor, जली हुई रस्सी जैसा odor. That goes with cannabis. These actually help to diagnose cases when the cases of poisoning come in casualty. And suppose you are getting this burnt rope odor from the person, you should think towards cannabis intoxication. The moment the patient smells of kacha badam goes with cyanides. These are important things. That is why they are repeatedly asked. Then G for garlicky odor. Garlicky odor has many differentials, means there are more than one poison which is associated with garlicky odor. The answer goes with arsenic, phosphorus, OPCs, organophosphorus compounds, and then one more. कौन बताएगा? जल्दी. One more. That is sulfox. Okay. Then K for kerosene-like odor. Kerosene-like odor is associated with few OPC compounds where the manufacturing company has used a solvent. Due to this solvent called Aromax. So this has got a kerosene-like odor. So those OPC pesticides will have a kerosene-like odor. R for rotten egg and rotten fish. Rotten egg goes with
H2S poisoning. This is also a repeat question. Rotten egg odor. Rotten fish or fishy odor goes with phosphites. Phosphite. Which phosphites? Answer goes with aluminium and zinc phosphate. And S for shoe polish odor, which is a repeat AIMS exam question. Shoe polish odor goes with nitrobenzene poison. Nitrobenzene poison. Okay. So this is our odor table. AB alphabet and then GKRS alphabet. Revise like this and you will not make any silly mistake in the exam. So hydrogen sulfide has got a rotten egg like odor. Nitrobenzene, shoe polish like odor. So let us move ahead. To next question. A patient has presented with increased secretions. Now this is one group of poison which is very important for all the exams including FMG exams. For FMG exams, they are highly fascinated to ask a question from this area. This area goes with, yes, the person is showing me muscarinic features. The moment I see muscarinic features in the form of salivation, lacrimation, urination, diarrhea, GIT distress and emesis, means sludge. And the moment I see pinpoint pupil, meiosis, I should think towards India is agricultural based country, and yes, OPC pesticides has to be the answer of choice. Okay? Without any doubt. OPCs are irreversible competitive inhibitors of acetylcholinesterase. Question of another exam. And the antidote for OPC is atropine. And recent question of one of the exams. When will you think of atropine toxicity while you are managing a case of OPC? Because atropine affects thermoregulation a lot. So yes, it leads to hyperthermia. It raises the set point of hypothalamus. Atropine leads to atropine fever, always remember. And that will be suggestive of कि atropine का dose ज़्यादा हो गया or atropine toxicity has occurred. Okay? So this is a simple question, not to be marked wrong. What is the end point of atropinization? Atropine देना कब बंद करेंगे? First answer of choice, dry pulmonary secretions, preferred as an answer over dilated pupils. Okay, all the important areas of OPCs, the most important ones have been revised. What is the cause of death in OPC poisoning? Diaphragmatic muscle paralysis, which we call as respiratory paralysis. Come to next one. With this, I will be revising few important aspects of odontology. Okay? Number of teeth in primary dentition. अब इससे सिंपल तो क्वेश्चन नहीं बन सकता दुनिया में, है कि नहीं? इससे आसान क्वेश्चन पूरे मेडिकल साइंस में नहीं बन सकता. We all know that primary dentition or temporary dentition has got 20 teeth. Okay? Temporary dentition has got 20 teeth. The moment I write permanent dentition, now my answer will change to permanent dentition goes with 32. So let us revise few important aspects of dentition, which is a volatile area but always to be remembered. Important for FMG exams in particular and all other exams. So we all know that in temporary dentition, the formula, if I divide the jaw of a kid into 4 quadrants, the formula is applicable starting from midline. Start from midline and we move laterally. And we know the formula 2102, 2102 in each quadrant. And that is why if I add the number of teeth in every quadrant, it is 5 and total number of quadrants is 4. The total number of temporary teeth will be 20. This is the first thing which we read now in odontology. Coming to permanent dentition. Permanent dentition, if I divide the jaw of permanent dentition person, I will say that the formula now changes to 2123. So 8 teeth in every quadrant makes it total 32. Why the number increases to 32? This also we know. With the addition of 3 molars in each quadrant, which will be added with time, what will happen? 12 teeth will be added in extra.
and so the number increases to 32. So what are the important data to be revised? Which is the first temporary teeth to erupt? In relation to temporary, remember the first to erupt is always lower central incisor. At what age? Answer. At what age? At the age of 6 months. And which is the last temporary teeth to erupt? The answer goes with last teeth to erupt goes with molar 2. Which teeth are not present and this erupts at the age of 2.5 or 2.5 years? Which teeth is not present in temporary dentition? Always remember, premolars are absent. Premolars are not present. Come to permanent dentition. Here we have a simple mnemonic, and the mnemonic goes with whenever mummy is in pain, papa can make medicine. Is in pain. Pain and papa stands for premolar 1 and 2 of permanent variety. Papa can make medicine. Can for canine, this make for molar 2, and this medicine for molar 3. Mummy is for molar 1, make and medicine for molar 2 and molar 3. Come to this one, is in for central incisor, lateral incisor. Pain and papa for premolar 1 and premolar 2. Can for canine. Now what happens is molar 1 erupts at the age of 6 years, and thereafter it is very easy to memorize. Just go on adding one after each. So the age of eruption of different permanent teeth can be easily memorized. And this range is molar 3 erupts in a very wide range of 17 to 25 years. So what will be the total number? This is also a repeat question of FMG exams. Which is the first permanent teeth to erupt? These are the simple questions which are asked, and you need not mark them wrong. These are easy questions. Which is the first permanent teeth to erupt? Molar 1 erupts at the age of 6 years. So answer will be molar 1. At what age? 6 years. Both the things can be answered. What will be total number of teeth in a 6-year-old kid? Now, the moment child age started increasing, he was 2.5 years, all 20 temporary teeth were there. Then he celebrated his 3rd, 4th, 5th, 6th. At 6th birthday, he is having 20 temporary teeth. And what is being added is 4 molars total in each quadrant, 1 molar. So the total number increases to 24. So that is why molars are said to be super added teeth. Whenever molars will be added, total number of teeth will increase. That means if I see a child between 6 to 11 years on an average, which is also called as mixed dentition period, what will be total number of teeth during mixed dentition? Now what will happen? A temporary central incisor will fall and permanent will erupt. Temporary lateral incisor falls and permanent erupts. The story goes till 11 years. So the total number is not going to change. The total number will always remain 20. Is it understood? This is a topic which should not be marked. इतना आना चाहिए, at least for FMG. Okay, done. So this completes our the most important aspect of odontology. Number of teeth in primary dentition, the first primary teeth to erupt, the first permanent teeth to erupt, all such questions can be easily answered. Then in relation to odontology, they also ask questions from dental charting that we will cover in the end. Some of the important images of dental charting I will be showing you in the end. Sexual pleasure obtained by getting hurt by opposite sex. The moment you see a question in a hurry, you can mark sadism as the answer, but the answer goes with masochism. Because who is getting this pleasure? The person who is getting hurt. Getting hurt means he is getting pain, he is getting the pain, he is getting sexually gratified. The person should be a masochist. Sexual pleasure obtained by hurting someone. The moment word hurting is added, I mean to say, the person who is hurting someone else is getting gratified, means you are giving pain to another and you are getting gratified. That means you are a sadist person. What is transvestism? Transvestism is also called another sexual perversion, also called as eonism or cross-dressing. The gratification is obtained by wearing clothes of opposite gender. A male wearing sari and he is getting gratified. He is getting amazed that yes, I am very happy now. Sexual gratification. What is exhibitionism? Display of private parts in public. Display of private parts in public.
That is very important. Display of private parts in your house is nothing. But exhibitionism is display of private parts in public, and that is giving gratification to a person. The person is showing exhibitionism. And exhibitionism can be an offense under 294 IPC. This we all know. Based on the 4 I alphabets of exhibitionism. That is the trick to remember. Then another important, sexual perversion. Now this is a very important area for FMG exams in particular. The list of perversions. So I'll be doing a quick recap. Then what is fraudulently? Just revise with me. If you know now, just revise with me. If you don't know, you will be getting that. What is fraudulently? Rubbing of private parts in public to a female posterior. And this can be an offense under 290 IPC. Then what are the other important perversions? Other important perversions are fetishism, where inanimate objects become objects of sexual desire, and usually this is one perversion, very important line of rating. This is one perversion which is almost exclusively associated with male gender. So this can itself be asked as a question. Which perversion is exclusively associated with male gender? Then comes another, that is scatologica. What is scatologica? Sexual gratification obtained by obscene telephone calls. Obscene means dirty. So the person here gets gratification by obscene telephone calls. This is a repeat question of FMG exams itself. In one or the other session, this was asked. Okay. So these are the most important perversions which should be there in our mind. What is eco-uterism? This can also be asked as a new sexual perversion. Eco-uterism is when the obscene sounds of sexual activity is giving the pleasure. Obscene sounds of sexual activity. Sounds make an echo, and that is the trick to remember this. Okay. So this area is revised. I hope there is no confusion in this. This you all are covering nicely. This you all cover nicely, isn't it? Let us move on to next one. As per MTP Act 2021, opinion of two doctors is needed for. Answer. Opinion of two doctors is needed for. Answer goes with option B. Two doctor opinion is needed for up to 20 weeks, not 12 to 20. For up to 20 weeks, one doctor opinion is needed. Then beyond 24 weeks, MTP can be done based on the opinion of a medical board. This also you all. This medical board will comprise of gynae practitioner, another member will be a pedia person, and another member will be either a radiologist or a sonologist, and then any other member as declared from the government time to time. They can also add other members. Chalo, let us come to this question. Now this was a toughly framed question. The topic is not tough, but the framing was tough. Read the lines. Artificial bruise can be differentiated from true bruise by which of the following? This simply means artificial bruise के लिए true क्या है? What is true about artificial bruise? Always remember. This is the meaning of the question. The moment you understand the meaning, now you can pick up the answer. Absence of vesicles. In artificial bruise, vesicles will be there. There will be itching sensation. So this is going to be wrong. Color change noted with time. This is noted with true bruises which occur due to blunt trauma. So this is also going to be wrong. Diffuse irregular margins. No, artificial bruise is due to use of acidic juices of marking nut, which is all scientifically called semicarpus anacardium, or by using acidic juices of calotropis. These are the two important juices which is used to produce artificial or false bruise. So yes, color change won't be there because the content of artificial bruise will be acidic serum and not blood. So color change is noted in true bruises: reddish, bluish, brownish, greenish, and yellowish. Diffuse irregular margins, that is associated with true bruises, which happens due to trauma. The margins are not, the margins are irregular there. But in artificial bruises, wherever you will apply the juice, the margins are going to be almost regular margins. So this is also wrong.
The last option, redness and inflammation more in surrounding tissues. This is a true statement for artificial bruise. See, redness and inflammation can occur in true bruises also. But in true bruises, what happens? Due to trauma, at that site of impact itself, redness and inflammation is seen. So here, redness and inflammation is more at the site of impact. But what about artificial bruise? You have applied the acidic juice. Because juices are fluidic, due to gravity, they will have a tendency to trickle down, whatever may be the body area where they are getting applied. So yes, due to gravity, they will be involving other areas also along with the main bruised area. So that is why we say redness and inflammation more in the surrounding tissues is seen in artificial bruises and not true bruises. Is it clear now? So true bruises will have absence of vesicles. True bruises, color changes will be noted. True bruises, diffuse irregular margins will be seen. So that also helps us to revise the important differences between true and artificial. Is it clear? चलो आगे बढ़ते हैं. Let us move ahead. Grievous hurt is said to be there if the person is in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits for a minimum of how many days? Something like this was asked. Days or week was in the options. The correct answer goes with, we know, as per 8th clause of 320 IPC. If a person is not able to follow ordinary pursuits for 20 days or if he is in severe bodily pain for 20 days, the hurt becomes grievous hurt. So let us do a quick recap. Grievous hurt as per 320 IPC comes under 8 clauses. 8 clauses define that yes, these injuries will comply with grievous hurt clauses. The first clause says emasculation means permanent destruction of penetrative power of a male. So this is the only clause which is applicable to male gender only. It is not applicable to female gender. Then comes another clause, that is permanent privation of sight of either of the eyes. Third clause goes with permanent privation of hearing of the either of the ears. Fourth and fifth can be remembered together with the help of MJ. M for member, J for joint. In fourth, what you have to do is cut this member or joint. Like amputations. Amputational injuries will come under clause 4. And clause 5, that due to an injury, if there is reduction of power of MJ. Both are related to member or joint of the body. Now, member is any body part which have its own function and which cannot regenerate if detached from the body. This we know. Then what is clause 6? Clause 6 goes with permanent disfiguration of head and face due to any injury. अब इसमें questions frame हो सकते हैं. आजकल FMG exams में बड़े अच्छे questions frame हो रहे हैं for last 2 to 3 years. Really conceptual questions. So if I frame a question that which of the following injuries can become grievous hurt, let me give you options and then pick the answer. I say abrasion over face, bruises over face, incised wound over face. What you will pick as your answer? I say that these are the 3 scenarios where the injuries are present over face, which will lead to permanent disfiguration. The moment I say incised wound, I will recall that this will heal with scar. And the same also goes with lacerated wound. Yes, my answer will go with incised wound. And they can also ask, according to which clause? According to clause 6. Come to clause 7. Clause 7 we remember like this now. Any fracture or dislocation of any bone or tooth. Fracture symbol has number 7 hidden, and this is the trick to remember, that causing of fracture of any bone, whether it is green stick fracture, it will be grievous. And clause 8 was the question, any hurt which endangers life or which causes either severe bodily pain or makes the person unable to follow his ordinary pursuits for a period of 20 days. So these are the 8 clauses to be remembered in the same sequence as given in 320 IPC. Okay. Chalo ji. Let us move ahead. Come to next question. All these are repeat questions of FMG exams. With the help of repeat areas, we are trying to revise the repeat topics with the help of questions. Come to this one. Which test is used to differentiate the species of a blood sample, whether the sample belongs to human or animal?
अब हमें पता है कि टीकमैन से क्या पता करते हैं कि सैंपल ब्लड है या नहीं है, टाकायामा से भी वही पता करते हैं, टीटी टेस्ट से वही पता करते हैं वेदर द सैंपल इज अ रेड स्टेन सैंपल इज ब्लड और नॉट। बारबेरियोस और फ्लोरेंस से क्या पता करते हैं वेदर अ व्हाइट स्टेन सैंपल इज वनीला आइसक्रीम और सीमेन स्टेन। एक ही तो आंसर ऑप्शन बच जाता है। बाय रूलिंग आउट ऑप्शन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली, ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन दैट यस डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विल बी डिफरेंट, DNA based methods are there, then precipitin test is there. These two important names should be revised before going to the example. So we can differentiate the species of a blood stain sample, seminal stain sample with the help of precipitin and DNA based. Chalo. So Teekmans and Takayama, Barbarios and Florence, I think everyone is confident of. We'll see lots of questions from these areas and they will help you in revising the topic in total. Let us move ahead. A substance abuser was found on roadside with pinpoint pupil. Which of the following should be suspected? क्या suspect करो? Which of the following should be suspected? The answer goes with the moment you see pinpoint pupil, you should recall that what are the important agents which lead to meiosis, and we will recall that yes, at least I will not forget OPCs, at least I will not forget opoid group of agents, at least I will not forget phenol, one of the corrosive acids which lead to meiosis. Then chloral hydrate, also called as dry wine. Then barbiturate group of agents. Barb is like phenobarbital. And also remember pontine hemorrhage cases. They can also give rise to meiosis. So my answer here goes with morphine, nothing else. And the list of dilators of pupil should also be revised. Here the important toxicological elements are cocaine, LSD, amphetamines, and Datura. Never leave Datura for any exam. Datura is a very important question area for all the exams. In FMG exams in particular, from these areas, from the dilator poisons, pupillary dilators, cocaine and Datura are repeatedly asked. Then OPCs are repeatedly asked question area. Okay. Cannabis as such is having no effect over the pupil size. In cannabis intoxication, what maximum can happen in the eyes is congested eyes, also called as a red eye. Come to this one. In an injury, it is noted under microscope that hair bulbs were crushed. This is the clincher. The moment you see crushing effect, the answer goes with laceration. The answer goes with laceration and nothing else. Okay. The moment I write the question lines. If I make a twist, that hair bulbs were cut. Suppose this is the line. Instead of crushed, the word cut is there. Your answer will go with incised. Okay. In incised wounds, hair bulbs will also be cut. So this is a very simple question, and it has been asked 3 or 4 times in last 4 to 5 years. These are bonus questions. This was a nicely framed question. I told you now they are asking nowadays conceptual questions in an attempt to tell you that sooner or later everyone will be giving next pattern exam. So you should have a thorough concept for future aspirants who are going to write next exam. In court of law, examination of a witness is being done to develop new or old facts, and the lawyer is trying to weaken the evidence by showing that evidence was biased, inaccurate, inconsistent, galat hai, evidence ekdam galat de raha hai witness ko kuch nahi aata. This is the purpose of cross examining lawyer. He tries to twist the findings of the case in favor of his client. This is the purpose of cross. And cross examination is also associated with 2 important questions. This is the part of examination which has got no time limit. Always revise this. And no time limit is also for exhumation, where a dead body is taken out from the ground. A buried dead body is taken out from the ground on the orders of a magistrate. And leading questions are normally allowed. What are leading questions? Questions which are answerable in yes or no manner. Have you seen the crime occurring? The lawyer asks the witness. Yes.
The witness says, yes. This is allowed in which part of examination in the courtroom? This is allowed in cross. This is allowed in cross. Examination is also called examination in chief. Examination in chief. Chalo, let us move ahead. So you all are thorough with courtroom procedures, I think. This was also a nicely framed question asked recently. A patient died because of doctor negligence, but some other factors were also responsible for his death. What is correct about this? This type of malpractices. See the lines of the question. A patient has died because of doctor negligence. So the question line says doctor is negligent and some other factors were also the reason of his death. This goes with contributory factors. So the best answer goes with contributory negligence. The moment I write a patient died because of some other factors which were the reasons of his death and not the doctor's negligence, your answer will change to novus actus interveniens, details of which we cover in our negligence topic now. What is novus actus interveniens? Act of God. Something unrelated to the situation has occurred which has led to death of the person. So the doctor cannot be held negligent. Okay. Res ipsa locutor says, when I write the lines of the question that a patient has died because of doctor's negligence and all the evidences of the case, they are speaking for the patient. And now in the courtroom, the judge is asking the doctor that prove that you are innocent. This is what is res ipsa locutor. The things or facts of the case, they speak on behalf of the patient. Everything is hence proved from the patient side. Now it is the accused doctor who will have to prove his innocence. And voluntary non-fit injuria was also given as one of the options. Always remember, this doctrine says this is also one of the defenses for we doctors. So what are the important defenses out of these options? This is one of the defense. This is defense. This is a defense. Novus actus interveniens. What is voluntary non-fit injuria? If informed consent has been taken, then the doctor cannot be held responsible for the common side effects. Like radiation necrosis is a known side effect of radiotherapy. After radiotherapy, a patient cannot allege that this radiotherapist has caused me this radiation necrosis, because he has already been explained that yes, this is a common side effect which happens with patients. So the doctor cannot be held responsible for the common side effects related to any procedure or intervention. So this is voluntary non-fit injury. So this is also a very important topic for FMG exams. Recently, you have got questions from this topic. This was a recent question. So thorough understanding of this topic is very important. So revise this topic from express revision videos. Okay. Then come to a person was brought to OPD with history of snake bite 8 hours ago. Snake bite itself is a very important topic for all the exams. And this was a conceptual question asked in FMG exams recently. The patient has come after 8 hours. The patient was noted to be in respiratory depression. Heart rate kam tha, drooping of eyelids, suggestive of ptosis. The moment you see all these neurotoxic features, what should strike to your mind? That this is a snake bite which is neurotoxic. Okay? And we all know neurotoxic, the common snakes are krath and cobra. Either it can be a krath bite or cobra bite. Okay? We don't know the snake. So what to do? The doctor did the treatment of choice. What is the treatment of choice for a snake bite? Give polyvalent anti-snake venom available in India. Initial dose is 8 to 10 vials. So based on his severity of condition, the doctor prescribed 10 antivirals, 10 antivenom vials to be given. In the hospital, no ventilator was available. Why he was searching for ventilator? Because the patient was in severe respiratory depression. He want to give symptomatic relief to the patient. What will be the next management for this symptom improval? Yes, I can give a test dose of lowest dose of neostigmine and the lowest dose of atropine. If at all the person was a case of cobra bites, this neostigmine, we all know, is a reversible inhibitor of acetylcholinesterase. Reversible inhibitor matlab, yes, it can be medically used. Irreversible ones, competitive inhibitors are
OPCs and carbamates. So they can be used medically. By giving neostigmine, if acetylcholine is there in the synaptic cleft, yes, the levels of acetylcholine will be raised. And those receptors where the venom has not still produced any venomous effects, we can see muscarinic and nicotinic effects. So yes, respiratory improval will be there now with nicotinic effects. So this is the target therapy to be used in such cases. So lowest possible test dose is to be given. If respiratory depression is improved, we can increase the dose of neostigmine further. But it will be useful in which bites? The venom, which will be acting over postsynaptic area, and we all know cobra and banded krath venom, they act over postsynaptic area. But krath venom acts over presynaptic area. Basically, what happens in krath venom bites due to krath venom? Acetylcholine is not released from the vesicles. So levels of acetylcholine is already low. So there won't be much benefit to the patient if at all I give neostigmine. That is why according to the guidelines, neostigmine is ideally recommended in cobra and banded krath bites. But here, this is the scenario where the type of snake is not mentioned, but you are able to make out the variety of the toxin, that it is neurotoxic snake. Okay. So this was a conceptual question, and more questions will be asked from snake bite, another high yield area. So two topics I have predicted for your exams. One is negligence topic. One question should be there. Another one is this snake bite. Go on writing those predictions. My predictions are very correct by God's grace. Now answer this one. Cut wounds over scrotum suggests which case? Now ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है. ये तो लेमैन से पूछ दो, किसी राह चलते आदमी से पूछ दो कि किसी के स्क्रोटम के पे कट वुंड्स है तो ये सुसाइड होगा कि होमिसाइड होगा. अब कोई सुसाइड करते समय अपना स्क्रोटम तो कट नहीं करेगा, कट थ्रोट करेगा ज्यादा से ज्यादा. उसको सुसाइड ही करना है, एकदम फेटल इंजरीज करनी है. कट थ्रोट वुंड्स विल बी देयर. व्हाई अ पर्सन विल गिव पेन टू हिमसेल्फ? So suicide cannot be the answer. Tentative cuts are hesitation cuts associated with suicidal tendencies. This cannot be my answer. Why will a person defend over with the scrotum? So this is a total false option ना. डिफेंस वुंड कैसे होगा स्क्रोटम पे? डिफेंस हैंड से करते हैं ना, इस एरिया से थोड़ी कोई डिफेंस करते हैं. So by ruling out options, yes, my single best answer goes with homicide. Cut wounds over scrotum is highly suggestive of homicide. Homicide means to kill a person by any means. Here the weapon used should be a sharp edge weapon. Cut wounds मतलब sharp edge weapon, like a knife. Now, in relation to scrotum, also remember, suppose I have made a cut wound over a scrotum. Ideally, in our theory, we read na, such injuries are called, from a distance, they will be giving the appearance of a laceration. So, such injuries are also called lacerated looking incised. Looking incised wound. है तो incised wound, है तो cut wound, but दिख रहा है laceration जैसा. क्यों? Because scrotum has got scrotum folds or scrotal rugosities. So another area where this same injury can happen is axilla. Axilla also had got axillary folds. So axilla and scrotum, what will be present is lacerated looking incised. इसका opposite एक पढ़ते हैं ना हम लोग, opposite नहीं ऐसे पढ़ते हैं. Incised looking lacerated wound कहाँ पर मिलेगा? दिख रहा है इंसाइज जैसा, बट इंजरी कैसा है? लैसरेशन है. Such injuries are seen when an impact, blunt impact or blunt weapon has been used over scalp area or over shin area or over knuckles area, any body area where a bony structure is just beneath the skin. So due to the resistance by the bony structure, yes, splits occur in the skin, and those splits are like this. They will appear to be incised wound from a distance, but the moment you watch closely, you will appreciate the irregular margins. You will appreciate that yes, there might be tissue connections between the two edges, which will be totally absent if I use a knife. Everything will be clean cut. ये important area है, injury and the weapon used to produce the injury for FMG exams in particular. एक बार में ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर आपसे पूछते हैं कि हेयर कट है तो कौन सा इंजरी है? इंसाइज्ड वुंड है. हेयर लैसरेटेड है तो कौन सा? हेयर क्रस्ट है, हेयर बल्ब्स, तो कौन सा इंजरी है? लैसरेटेड वुंड है. एक दो और क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको इंजरीज टॉपिक से.
The third important prediction is a question sort of like this. Anything in relation to weapon and injury. देखो ये रिपीटेशन देखो इस क्वेश्चन का, एक सेशन में अभी हमने किया था ना, तो क्रशिंग ऑफ एयर बल्ब इज सीन इन, क्रशिंग इज सीन इन लैसरेशन. If you have done this question, this was asked in I think 2019 or 20. Again, it was repeated recently in 2022. So repeat questions of FMG exams are very important. You need to cover in each and every subject the repeats of FMG exams. For all other exams, it is also important, just like your exam. Poisoning caused by retained bullets. अब ये तो straightforward question है. Bullets are made up of lead metal. And yes, lead ही लगा होगा. अब इसमें arsenic लगा के आ जाओगे तो फिर तो ये वो वाली बात हो जाएगी. ये तो पाप है ना लगाना. ये तो पता होता है bullets and pellets are made up of lead metal. So poisoning caused by retained bullets, also called as souvenir bullets, कौन से सिचुएशन में होता है? When the bullet has entered vertebral bodies. So even a neurosurgeon sometimes leave the bullets because while retrieving the bullet there might be more damage. तो ऐसे bullets के साथ क्या हो जाता है? With time fibrosis occurs because it is a foreign body for us. Such bullets are called souvenir or retained bullets and they obviously will lead to lead poisoning. Come to this one. This is again a predicted topic. पूछा जा सकता है. ये अभी ना 2 साल पहले आया था आपके एग्जाम में, अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए for last 2 years. It can be repeated again. Hypoxic classification, hypoxic death classification has been given by Gordon's. So according to Gordon's, anoxic hypoxia is one of the types of hypoxia which usually can be seen in asphyxia or if the person goes to a high altitude without any prior acclimatization. Cyanide poisoning will lead to histotoxic hypoxia. CO poisoning will lead to anemic hypoxia. Heart failure will lead to stagnation of blood in blood vessels called as stagnant hypoxia. What are the 4 types of Gordon's hypoxic death classification? ASHA types. A for anemic, S for stagnant, H for histotoxic, A for anoxic. ASHA, the famous worker of PSM subject, which is itself a very important question. That important question is your trick to remember Gordon's classification of hypoxic death. Next question. Which of the following produces catecholamine storm as seen with scorpion? अब scorpion किस family का है? Scorpion belongs to Arachnidae family. And along with scorpion, we should remember scorpion and spider, they belong to the same family. So they mainly act over autonomic nervous system, we all know. And they lead to sympathetic discharge, increased sympathetic discharge in the form of catecholamine storm. Initially, later on, parasympathetic system activation can also be seen. Correct? This is a straightforward question. So, spider and scorpion, they belong to Arachnidae family and the members of a family behave in a similar manner. A cricketer got hit by a ball and fainted. After some time, he regained consciousness and again fainted. This phenomena, तो मतलब person unconscious था, conscious हुआ, फिर से unconscious हो गया. The phase of consciousness between 2 unconscious phases is called lucid interval, and we know the single best answer for this question will be extradural hemorrhage, referred as the first answer of choice. Suppose EDH option में नहीं है, then you can mark SDH as your next best answer. Next one. A person got, अब ये बहुत nicely framed question था आपके exams. Answer बताओ इसका. All of you try to solve it quickly, giving you some time, 10 seconds. Answer. कौन बताएगा सबसे पहले? Let us see. A person got agitated, lost consciousness at airport. एयरपोर्ट पे आप मेलिंगरिंग नहीं कर सकते है ना. मैं तो ऐसे सोचता हूँ, लेमैन की तरह सोचो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन बहुत इजी है and it will become easy. A person got agitated, fainted, lost consciousness at airport. क्या आप एयरपोर्ट पे मजाक कर सकते कि मैं बेहोश हो गया? नहीं कर सकते. मैं समझूंगा कि all of the following is true in this scenario except the person is malingering is a false option ना. So yes, this
should be my answer. Let us keep this on hold. A bag full of enema and laxatives was recovered from him. Unless the person is a clismaphilic person. What is clismaphilia? Clismaphilia क्या होता है? Sexual perversion obtained by rectal enemas. तो क्लिस्माफिलिक होगा तो समझ आता है कि फुल ऑफ रेक्टल इनीमा लेकर जा रहा है, ही इज गेटिंग सेक्सुअली ग्रेटिफाइड बाय रेक्टल इनीमास, तो ये एक डिफरेंशियल हो गया. बट यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट द एक्सरे एब्डोमेन शोड अ पिक्चर एज शोन. अब एक्सरे एब्डोमेन में आपको पिक्चर दिखाया गया ऑफ पैकेट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द bowel. Large bowel is full of packets. This is not normal. This is not normal. The person is malingering is my true option. अब मैं confirm हो जाऊँ. And yes, abdominal scan will be indicated. This is a true statement. He is at risk of poisoning. Yes, these packets, they might rupture. And what is this scenario called? Body packer syndrome. Body packer syndrome. Where a person packs his body with packets. These are the packets. These packets are usually filled with narcotic drugs. And yes, for commercial transport across countries, people consume all these packets. Okay? Because these packets, they appear in abdominal scan, like in this radiography, as stacks. Pile of stacks है ना, parallel layers में arranged है. तो इसमें ना कुछ important signs है, radiological signs, उनको revise कर लेते हैं. In relation to body packet sign, one is called parallelism signs. Means the packets arranged in parallel layers, seen on X-rays. Because these packets resemble the shape of tic tac. इसको technically बोला जाता है, they appear as oblong shape on X-ray goes with tic tac. जो tic tac mint tablets होते हैं ना, तो इस साइन को बोला जाता है tic tac sign. Because the packets का हमें इमेज, जो रेडियोग्राफिक इमेज दिखता है, that resembles the shape of a tic tac tablet. And यहां पर जब देखते हैं ना रेडियोग्राफी पे, what we see is that sometimes during packaging, जैसे ये पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, इसके बीच में ये नार्कोटिक एजेंट रखा हुआ, sometimes due to defective packaging, air can be trapped in between the packaging material. वो एयर कैसा दिखता है? ट्रांसल्यूसेंट रिम की तरह, तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्रांसल्यूसेंट रिम. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डबल कॉन्डोम साइन. ये तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है रेडियोलॉजिकल साइन, which is given in forensic text. तो ये तीनों साइन याद रखना. कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? All of the following are radiological signs in body packer syndrome except parallel layers में arranged होते हैं, stack of parallel layers, tic tac shape के होते हैं, X sign. Due to air trapping in between the packaging layers, sometimes you can get a translucent rim called as double condom sign. याद हो गया तीनों साइन? Usually which drugs are transported across countries? जो बहुत कॉस्टली हो. बहुत कॉस्टली कौन से एजेंट्स होते हैं? नार्कोटिक एजेंट्स. शराब कोई थोड़ी ट्रांसपोर्ट करता है, अल्कोहल कोई नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा ना, निकोटीन कोई नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा. दे आर नॉट कॉस्टली एजेंट्स. कॉस्टली एजेंट्स को ट्रांसपोर्ट करके द पर्पज इज टू गेन मनी, टू गेन प्रॉफिट. व्हाट इज बॉडी पैकेट सिंड्रोम इज क्लियर ना? बॉडी स्टफर सिंड्रोम क्या होता है? बॉडी स्टफर्स, इसका छोटा भाई बोलने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे उसको टाइम नहीं है पैकेट वैकेट बनाने का. There is a local drug peddler who has been caught. उसको पता चल गया कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट is going to make a raid. So he has stuffed his own body with all the drugs available in his house. उसने कोकेन, हेरोइन सब खुद ही कंज्यूम कर लिया. Yes, again, a body stuffer will also be at risk of poisoning. Abdominal scan करेंगे या फिर लैब टेस्टिंग करेंगे ना, ब्लड सैंपल एस्टिमेशन करेंगे, तो those drugs will be estimated there. ठीक है? Body stuffer syndrome is like at local level. Local drug peddler stuffing his body with actual drugs, not the packets. Packets goes with double sign is like when you see a translucent rim on radiological sign due to air getting trapped in between the packaging layers. चलो आंसर बताओ इसका. A dead fetus was found in water canal. The crown heel length was found to be 25. बाकी छोड़ दो, बाकी सारी फाइंडिंग छोड़ दो. क्राउन हील लेंथ आपको दे दिया गया ना, क्राउन हील लेंथ दिया हुआ है कितना? 25. तो बाय अप्लाइंग Hess's rule of 5, we know
for the first 5 months of pregnancy, the age of the fetus in months is equal to square root of crown heel length in centimeters. ये हमें याद रखना है. तो स्क्वायर रूट कर लो 25 का, कितना हो जाएगा? इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग. 5 months. करेक्ट आंसर विल गो विथ 5. अब आपके मन में एक ख्याल आएगा, एक सवाल आएगा कि सर कौन सा लगाना है, कब लगाना है? तो ये बोलते हैं फर्स्ट 5 months के लिए. नेक्स्ट 5 months के लिए कैसे निकालते हैं एज? नेक्स्ट 5 months के लिए एज इन मंथ इज इक्वल टू क्राउन हील लेंथ इन सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 5. कब कौन सा लगाना है? जो आपका लैंडमार्क है ना, बेंचमार्क है, कट ऑफ क्राउन हील लेंथ है वो 25. अगर क्वेश्चन में 25 दिया है तो स्क्वायर रूट इजिली कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5 month. द मोमेंट यू सी मोर देन 25, जैसे कि 26, 28 या 30, डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, दिस इज द कट ऑफ थिंग. तो फॉर द फर्स्ट 5 months हैसीज रूल बोलते हैं, नेक्स्ट 5 month को मॉरिसंस रूल बोलते हैं. डिफरेंस यही है. और कब कौन सा लगाना है? कट ऑफ क्राउन हील लेंथ कितना है? 25. 25 है तो स्क्वायर रूट करना है, 25 से ज्यादा है क्राउन हील लेंथ तो डिवाइडेड बाय 5. यू विल रीच योर बेस्ट आंसर. ठीक है, क्लियर? चलो, जेंडर असेसमेंट इज बेस्ट डन बाय. अब ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट इसको टफ बनाया जाएगा फ्यूचर एग्जाम में. हो सकता है जून मंथ में पूछ दे. जेंडर असेसमेंट इज बेस्ट डन बाय अप्लाइंग विच टेबल? नेम द टेबल. कौन बताएगा नाम? विल टेल द नेम ऑफ द टेबल जिससे जेंडर असेसमेंट का पता चला हमें कि सेक्सुअल एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट बोन्स was given to us by, यहाँ पर आंसर हिप है. किसने बताया ये बात? सबसे पहले आंसर, नेम ऑफ द पर्सन इज क्रॉगमैन्स. तो इनको कभी नहीं भूलना है. क्रॉगमैन्स gave us a sexual accuracy for sexing skeletal remains. According to Krogman's, all 206 bones will have 100% accuracy for gender differentiation. If the policeman has brought pelvis and skull bone, accuracy थोड़ा सा डिक्रीज होगा, 98. Only pelvis will have accuracy of 95. So the question is based from this table itself. So remember the name also. The single bone having highest accuracy is pelvis, and here the correct answer goes with hip. Hip बोले pelvis बोले एक ही बात है ना. Only skull will have accuracy of 90%. So at least remember this much in relation to gender differentiation accuracy from different bones. Very good, Monimala. चलो इसका आंसर बताओ. अब बैलिस्टिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बैलिस्टिक्स में ना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको सही करना है ना, उनको गलत नहीं करना है. A gunshot case brought for autopsy shows an entry wound with inverted margins. ये तो क्लियर है कि एंट्री वुंड है, एंड दिस इज सराउंडेड बाय टैटूइंग. तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एंट्री वुंड प्लस टैटूइंग. ठीक है, एंट्री वुंड के बारे में नहीं बताया कि राउंड एंट्री है, ओवल एंट्री है, कैसा है. ठीक है, हमारे को जो बताया गया है वही देखना है. बर्निंग एंड सिंजिंग ऑफ हेयर्स इज नॉट नोटेड. ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला. बर्निंग एंड सिंजिंग नहीं मिल रहा. बर्निंग एंड सिंजिंग नहीं मिल रहा है तो आंसर क्लोज रेंज कभी नहीं हो सकता. अब क्लोज तो ऑप्शन में ही नहीं है. कॉन्टैक्ट कैन बी इजिली रूल्ड आउट क्योंकि हमें टैटूइंग दिख रहा है स्किन पे, बर्निंग एंड सिंजिंग नहीं है. फिर उसके बाद डिस्टेंट भी हट जाता है. डिस्टेंट में तो इफेक्ट्स मिलते ही नहीं है, यहाँ पर टैटूइंग मिल रही है. अब दो ऑप्शन बचते हैं. अब इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा? वी रिमेंबर एंड वी रीड इन आवर क्लासेस देयर इज वन रेंज ऑफ फायरआर्म वेपन कॉल्ड इंटरमीडिएट, which is also called medium range, which is also called near shot. तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा टू पिक? बेस्ट आंसर टू पिक विल बी नियर शॉट. इट वाज अ टफली फ्रेम्ड क्वेश्चन इन एफएमजी एग्जाम, बट अगर आप बैलिस्टिक टॉपिक पढ़ रखे हैं ना क्लास में, इन आवर क्लासेस, तो ये क्वेश्चन एकदम टफ नहीं. इज अ सिंपल टॉपिक. वेरी गुड, वेरी गुड. अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि टैटूइंग के साथ डॉक्टर को और क्या मिला ड्यूरिंग ऑटोप्सी? सिंजिंग ऑफ द हेयर्स. द मोमेंट आई सी सिंजिंग, व्हाट आई विल रिकॉल इज दैट दिस इज गोइंग टू बी क्लोज रेंज, क्लोज शॉट. S of close goes with S of singeing.
T of intermediate goes with T of tattooing. ये सब क्लिंचर्स है ना जो आपको एग्जाम हॉल में रिकॉल कराते हैं. तो ऑलवेज expect one question from ballistics in any session of FMG exam. तो अभी तक क्या क्या predictions हो गए रिकॉल करो. Negligence topic, snake bite. 2 topics sure shot. You can get any question from these 2 topics. चलो आगे बढ़ते हैं. And 1 from ballistics, either from type of bullet, either from range of firearm work. These are the 2 areas which are explored in your exams in particular. फिर cartridge पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप्स ऑफ गन पाउडर पे क्वेश्चन पूछते हैं. तो ये 3-4 चीजें तो पढ़नी है बैलिस्टिक्स. पीजी एग्जाम्स के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़. Which IPC section is related to medical negligence? अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर बताओ. गिविंग यू सम टाइम. Which IPC section is related to medical negligence? Answer goes with 304. 304. 300 क्या डिफाइन करता है? 300 सेक्शन डिफाइंस मर्डर. 302 defines the punishment for murder. 304b defines dowry death, as well as the punishment of dowry death is mentioned there. This dowry death, death of a married female within 7 years of marriage, and if it is proved that just before death there was demand for dowry either by husband or any relative of the husband, like in-laws, father-in-law, mother-in-law, like that, brother, sister, anyone in relation to in-laws, तब जाके केस को बोलते हैं डाउरी डेथ. It has to be proved that just before death there was demand for dowry. And if the female dies due to unnatural circumstances within 7 years, now the case becomes dowry death. What is the minimum punishment? 7 years. Maximum is life in prison. So 3 plus 4 makes it 7. Death within 7 years. And saza kitni milti hai husband ko ya in-laws ko if they are the accused people and it is proved that they are responsible for causing death of the female? Minimum 7 years. Minimum 7 years. Dowry death will be investigated by पुलिसमैन और मैजिस्ट्रेट. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. पुलिस या मैजिस्ट्रेट कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? आंसर विल बी मैजिस्ट्रेट. यूजुअली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स दे इन्वेस्टिगेट डाउरी डेथ केसेस एंड एक्सह्यूमेशन केसेस. आंसर दिस वन. अ फीमेल आफ्टर 4, देखो आ गया ना क्वेश्चन. I have tried to compile ना the similar questions also so that you get an idea कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम. अब ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया ना, इनक्वेस्ट वाला. अभी रिसेंटली भी पूछा गया एक अच्छा सा क्वेश्चन. पहले इसका आंसर बताओ. इन दिस केस द इनक्वेस्ट शुड बी डन बाय, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, इट हैज टू बी डन बाय मैजिस्ट्रेट, एंड टू बी एग्जैक्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कॉल्ड एज एसटी. केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. अब ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया आपके एग्जाम के लिए, पोस्टमार्टम चेंजेस. तो पोस्टमार्टम चेंजेस को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है. एंड पोस्टमार्टम चेंजेस में भी ना बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं एफएमजी एग्जाम में, फ्रॉम राइगर मोर्टिस एंड कैडावरिक स्पैसम एंड पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ये 2 चेंजेस को लेकर, एंड दूसरा लेट पोस्टमार्टम चेंजेस को लेकर. अर्ली एंड लेट तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. पोस्टमार्टम चेंजेस इन टोटल शुड बी रिवाइज्ड बिफोर द एग्जाम. So a case of road traffic accident was brought for autopsy. Stiff neck, hands, पूरे body में stiffness है. This is suggestive of, I will think that yes, whole body muscles are involved. Rigor mortis, nothing but rigor mortis. But the moment I write a case of RTA was brought for autopsy, somehow within few minutes of death, the policeman noted that only the hand muscles were stiff in the form of clenched fist. What is this suggestive of? Will your answer change the moment you are shown a clenched fist in the image which actually came as an image based question? So now your answer will shift to, this is going with cadaveric spasm. Within some time of somatic death, like within 1 to 2 hours, if I am seeing contraction of one group of muscles which usually occur due to struggle at the time of existence, mainly seen in drowning cases, but if at all a question is prepared like this, your best answer goes with cadaveric spasm, because this involves one group of muscles. Rigor mortis involves all body muscles. When rigor mortis sets in,
And suppose the rigor mortis has involved the hand muscles, now you cannot differentiate which muscles are in हैं दोनों contraction. Cadaveric spasm is occurring at the time of somatic death. Rigor mortis कब शुरू होता है? At the time of molecular death of individual muscles. Cadaveric spasm में molecular death somatic death पे ही हो गया. कौन से group of muscles में? One group of muscles. Rigor mortis is due to molecular death of individual muscles with time. तो molecular death कब होता है? Loss of ATPs के साथ. मैं बोल सकता हूँ ना, to summarize in a basic way, cadaveric spasm is molecular death in one group of muscles which occur at the time of somatic death. This is how you should revise postmortem changes with basic lines, and never ever you will make a mistake. आंसर बताओ. A female faked a pregnancy and presented a real child. तो faked pregnancy करने का कोई मोटिव होगा ना. There should be a malafide intention, and she presented a real child to blackmail a guy. What is correct about this? Such child is called always supposititious child. Another name, synonym is fictitious child. Fictitious child. Spurious क्या होती है? Spurious pregnancy होती है. False pregnancy. Also called as spurious pregnancy is also called as pseudocyesis. So this is a psychological disorder seen in some females, where the female is of the false belief. It is a sort of delusional belief that I am pregnant, but actually the female is not pregnant. Such condition is called pseudocyesis or spurious or phantom or false pregnancy. Superfecundation and fetation तो पता है. What is superfecundation? Two different act of coitus giving rise to two fertilizations on another date, another time पे. ठीक है, एक साथ नहीं. Two different act of coitus giving rise to two fertilizations in one menstrual cycle. That is fecundation. What is fetation? Female got pregnant in one menstrual cycle. Instead of primary amenorrhea, she is getting fertilized in another menstrual cycle, which is not possible in humans. Can be seen in some animals, but not possible in humans. More to create MCQs. That is what is superfetation. Two different act of coitus यहाँ भी है, but menstrual cycle भी different है. Menstrual cycle same कहाँ पर है? Fecundation. Age of the fetus same कहाँ पर होगा? Fecundation. Age of the fetus different कहाँ पर होगा? Superfetation. Fathers different कहाँ कहाँ हो सकते हैं? दोनों में. क्यों? Because act of coitus is different. Fathers might be different. ऐसा नहीं कि हमेशा different ही हों. It is based on the lines of the question. एक possibility है. But twins में क्या होगा? Single act of coitus giving rise to two fertilizations. Single act of coitus है तो father हमेशा same होगा of both the fetus. ठीक है. अब ये एक अनदर प्रेडिक्टेड टॉपिक है जहां से फिर से क्वेश्चन आए. INI CET नीट पीजी बोले, FMG एग्जाम बोले, ये टॉपिक तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. Stains over clothes when examined showed yellow color needle shaped crystals. Examined stains. अब येलो कलर नीडल शेप क्रिस्टल्स दिखते ही क्या स्ट्राइक करना चाहिए? These crystals are made up of spermin picrate. ये ऐसे रिकॉल होना चाहिए. अगर ये रिकॉल हो रहा है ना इस तरीके से, मतलब आपका रिवीजन सही लेवल पे. Spermin picrate crystals are formed in Barberio's test. एंड क्या पता करते हैं कि जो व्हाइट स्टेन सैंपल है वो वनीला आइसक्रीम है या सेमिनल स्टेन है? यही तो पता करना है बारबेरियोस से. तो वी ऐड द सैंपल विद पिक्रिक एसिड. इफ आई गेट स्पर्मिन पिक्रेट क्रिस्टल्स व्हिच आर येलो कलर नीडल शेप, तो मुझे क्या पता करना है कि सैंपल सीमेन है या वनीला आइसक्रीम. व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्पर्मिन इन द सैंपल? प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस और सेमिनल वेसिकल सिक्रीशंस. तो कैसे रिकॉल करते हैं? R of spermin goes with R of prostate. Moment you see spermin, recall R of prostate. This R you will see in Barberio's too. This is the trick to minimize our silly mistake. चलो आंसर बताओ. A 17-year-old girl was kidnapped. Police caught the accused and brought him to police station. After some time, the accused was found dead. Inquest in this case will be done by. अब दुख कब होगा? अब कब होना चाहिए एक्चुअल में दुख? जब इसका आंसर तुम कॉर्नर लगाकर आ जाओ. क्योंकि कॉर्नर इंडिया से कब खत्म हो गया? 1999 में लास्ट मुंबई में फॉलो हुआ.
इसका आंसर कॉर्नर लगा रहे हो मतलब कि इस टॉपिक को ही नहीं पढ़ा है तुमने। अब इंक्वेस्ट को अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो गलत बात है। तो ये टॉपिक्स जो रिपीट टॉपिक्स हैं विच आर गेटिंग रिपीटेड एवरी ईयर ऑलमोस्ट, इनको इन पे कमांड होना चाहिए। तो यहां पर बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑलवेज। अक्यूज्ड को पुलिस लेकर आई, कहां पर? पुलिस स्टेशन में। अक्यूज्ड के साथ क्या हुआ? वो डेड पाया गया। एलिगेशन किसके ऊपर है? पुलिस के ऊपर। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट खुद ही करेगी? जिसके ऊपर एलिगेशन है वो खुद ही थोड़ी इन्वेस्टिगेट करेगी। आंसर क्या होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ऐसे केसेस में वेयर डेथ अकर्स इन पुलिस स्टेशन, डेथ अकर्स ड्यू टू पुलिस फायरिंग, डेथ इन एनी कस्टडी लाइक पुलिस कस्टडी, चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशंस कस्टडी, और डेथ इन मेंटल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यूजुअली। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, they do investigate in which cases? Usually dowry death and exhumation cases। तो एकदम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट एंड ऑल वी हैव कवर्ड नाइसली इन आवर क्लासेस। 176 सीआर, लाइक एक बार क्विक रिकैप करते हैं। 174 सीआरपीसी डील्स विद पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इंक्वेस्ट, where the minimum rank of police official who is allowed to do the inquest overall is head constable। हेड कांस्टेबल ओवरऑल मिनिमम रैंक है, बट मिनिमम रैंक का आंसर कब चेंज हो जाता है? व्हेन आई पर्टिकुलरली राइट दैट इट वाज अ रेप केस which was to be investigated or inquest was to be done। So minimum rank for rape inquest, now your answer goes with sub inspector। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं पुलिस इंक्वेस्ट से। 176 CRPC deals with magisterial inquest which is further broadly classified into 176 subsection 1A and 176 subsection 1। ये सीआरपीसी के ही सब टाइप्स है। अंडर सबसेक्शन 1A इंक्वेस्ट इज डन बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अंडर सबसेक्शन 1 द इंक्वेस्ट इज डन बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जिसके ऊपर कौन होते हैं हायरार्की में? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। इनके ऊपर कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूरे जिले का काम संभालना है, तो इंक्वेस्ट यूजुअली कौन से लोग करते हैं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में भी एक हायरार्की होती है। अब कोर्ट एंड कोर्ट रूम पावर एंड देयर हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एफएमजी एग्जाम्स इन पर्टिकुलर। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हायरार्की कैसे होती है? जस्ट लाइक ट्रेन्स, ट्रेन्स में सेकंड क्लास लोअर रैंक होता है, तो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज द लोअर रैंक। इनके ऊपर आते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनके ऊपर आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अपने कोर्ट रूम प्रोसीजर्स होते हैं, इसीलिए ये हर केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। दैट इज वाई the aspirants who are giving civil services and they have cleared civil services with good ranks, yes, they are given administrative powers that they can do inquest to share the workload of judicial magistrate। So what is their usual scope of inquest? Dowry death and exhumation cases। इतना तो याद रहेगा ना बस। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यूजुअली कब इन्वेस्टिगेट करते हैं? किसी भी केस में कर सकते हैं, बट यूजुअली इनको कब बुलाया जाता है? व्हेन देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एलिगेशन ओवर अ पुलिसमैन। तो प्रेफर्ड वन इज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज पर 176 सबसेक्शन 1A ऑफ सीआरपीसी। तो व्हेनेवर डेथ हैज अकर्ड इन पुलिस एनी कस्टडी, डेथ हैज अकर्ड ड्यू टू पुलिस फायरिंग, ऐसे कोई भी सिनेरियो में एमसीक्यू का बेस्ट आंसर क्या होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये क्वेश्चन आपके एफएमजी एग्जाम में आया 23 में, एंड नाइसली फ्रेम्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? डेथ ऑफ अ पर्सन हैज अकर्ड इन पुलिस कस्टडी, हु कैन डू द इंक्वेस्ट? अब यहाँ पर केस लॉज है इंडिया में, उन केस लॉज के अकॉर्डिंग इफ डेथ हैज अकर्ड इन कस्टडी एंड दैट डेथ वाज नेचुरल, जैसे कि मान लो एक आदमी की डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में ड्यू टू माय एमआई, ही वाज अ नोन केस ऑफ एमआई, एमआई के अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। ड्यूरिंग ऑटोप्सी आई विल डू अ टीटीसी टेस्ट, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, वेयर आई विल डिप द हार्ट स्लाइसेस इन टीटीसी, एंड फिर मैं पुलिस वाले को दिखाऊंगा कि ये देखो यहाँ पर ब्राइट रेड एरियाज है, यहाँ पर पेल येलो एरियाज, वी हैव कंफर्म्ड इट ड्यूरिंग ऑटोप्सी, दैट इज अ पोस्टमार्टम डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर गिविंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। Then I will cut the coronaries at regular intervals. I will show the policeman
कि ये देखो, आई विल राइट इन माई पीएम रिपोर्ट दैट ये देखो ब्लॉकेज ऑफ एलईडी, एलसीएक्स और आरसी, तो दैट इज अ नेचुरल डेथ. सो ऐसे केस में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन डू द इन्क्वेस्ट, दे कैन डू द इन्क्वेस्ट इवन इफ द डेथ हैज अकर्ड इन पुलिस कस्टडी. क्योंकि आपको जब ये क्वेश्चन पूछा गया ना, डेथ हैज अकर्ड इन पुलिस कस्टडी, हु कैन डू द इन्क्वेस्ट, कुछ पुलिस की अथॉरिटीज का नाम था, जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस सुपरिटेंडेंट, समथिंग लाइक दैट. वन ऑफ द ऑप्शंस वाज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. तो ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑप्शन में नहीं है, तब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लगाना है, एंड ये एक्सप्लेन भी होता है लॉ के ऊपर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ये क्लियर हो गया ना, जिनका भी क्लियर नहीं था तो इसको ऐसे ही क्लियर रखना है. So what is the best type of inquest in India? Inquest by judicial magistrate. इंडिया में क्या नहीं फॉलो होता है? कॉर्नर्स इंक्वेस्ट. लास्ट फॉलोड इन इंडिया टिल 1999 इन मुंबई, which is a jury system. Medical examiners inquest is the best type of inquest in world, followed in US states. ये वाला क्वेश्चन बताओ. अभी फिंगरप्रिंट के ना इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा एंड क्वेश्चन पूछूंगा, दैट आई हैव प्लान्ड इन द एंड. फिंगरप्रिंट इमेजेस एंड आई विल शो यू डेंटल चार्टिंग इमेजेस. यहाँ पर आंसर क्या होगा? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डाइंग डिक्लेरेशन गिवन बाय अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड बिकम्स इनवैलिड. हाफ रिकॉर्डेड होता है तो एडमिसिबल होता है. नॉट साइंड, साइनिंग इज नॉट नेसेसरी. डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी पर्सन, बेस्ट इफ रिकॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट, अगर टाइम है तो. yes, by ruling out options, this can be my answer. But if the victim survives, why it becomes inadmissible? Because now this victim will be called in court to record his oral evidence. Why to rely on a documentary evidence like dying declaration? Dying declaration is a document, no? It has been written by someone. Oral evidence always will have a higher weightage. Why? Because the cross examination of the witness now can be done in the courtroom. Okay. तो डाइंग डिक्लेरेशन आधा रिकॉर्ड करके डेथ हो गई तो भी एडमिसिबल होता है. नॉट साइंड है तभी भी एडमिसिबल होता है. नॉट रिकॉर्डेड बाय, कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी पर्सन. इट हैज टू बी. ठीक है, बट स्टिल इट विल प्ले अ कोरोबोरेटिव रोल. मान लो ओरल एविडेंस देने के लिए एक तारीख दी जाएगी ना, उसको समन आएगा. अब कब जाता है नहीं जाता है, कब का समन आता है, दैट इज अ सिनेरियो ना. तो इन बिटवीन द मीन टाइम पुलिस क्या करती है? उस डाइंग डिक्लेरेशन के फाइंडिंग्स को यूज करती है टू सॉल्व द केस. हाउ? Patient ने बताया at the time of recording of dying declaration that I have been killed by this fellow and he has hidden the knife at so and so place in the house. The accused was a known relative. पुलिस वहां जाती है and they recover the knife. Over the blade they recover the blood of the victim. Over the handle they recover the fingerprint of the accused. Weapon used to commit the crime has been recovered. Very good corroborative evidence. That can be utilized by the police official. But as such, this document will be inadmissible in the courtroom, but the judge will tell that please call the witness and record his or her oral evidence. I hope it's clear. Dying declaration is defined in which section? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, FMG एग्जाम का. डाइंग डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में आता है? 32 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस है. एविडेंस है ना, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एविडेंस. तो एविडेंस एक्ट में आता है कौन से नंबर पे? 32. With regards to fetal death, again a high topic. Fetal death and ये आपके जो stain analysis topic है, इनको इतना छोटा बना लेना है ना कि एकदम 1 सेकंड में रिवाइज. They should be revised within 1 second. With regards to fetal death classification, 1 second बोलने का मतलब है ठीक है, थोड़ा सा ले लो 2-4 सेकंड, बट बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए. With regards to fetal death classification, lung is dipped in water in which test? Answer goes with hydrostatic. कई बार ना रेगेट्स नाम भी दिया जाता है ऑप्शन में. रिमेंबर द सिनोनिम्स. इट इज आल्सो कॉल्ड रेगेट्स और फ्लोटेशन टेस्ट. व्हाट इज फ्लोट? व्हाट इज whose flotation is noted? Lungs flotation. If the lungs are floating due to specific gravity of lungs being less than 1, so yes, that goes with live birth. If the lungs have a specific gravity more than 1, more than water, water का कितना होता है? 1. If the lungs have a specific gravity more than 1, that is suggestive that the fetus has not done the respiration. It should be a case of stillbirth. ठीक है. Caudaries
का दूसरा नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? व्हाट इज द प्रिंसिपल यूटिलाइज्ड हियर? वेट ऑफ बोथ द लंग्स। स्टिल बर्थ में कितना होता है? 35। लाइव बर्थ में ड्यू टू रेस्पिरेशन देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द लंग्स, तो वेट ऑफ द लंग डबल्स। पॉकेट्स में क्या करते हैं? वेट ऑफ द लंग इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द फीटस। स्टिल बर्थ में वैल्यू कितनी होती है? 1/70। लाइव बर्थ में पॉकेट्स की वैल्यू कितनी होती है? 1/35। इज रेडिंस टेस्ट प्रेजेंस ऑफ एयर इन मिडिल ईयर by dipping the ear area of a fetus who has been brought by a policeman for autopsy. तो मैंने क्या किया? Puncture the tympanic membrane. If I see air bubbles rising to the surface of the water, I will say yes, the child has done the respiration, means it goes with live birth. If putrefaction changes have not occurred, all these tests will be useful. जितने ये एयर वाले चेंजेस है ना, ये प्यूट्रीफैक्शन के पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यूट्रीफैक्शन में भी प्यूट्रीफाइड गैसेस बनने लगे, ठीक है ना। Another test is Breslau's second life test. इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। The 5 important tests have been revised. Breslau's second life test क्या कहते हैं? Put the stomach and bowel area of a fetus during autopsy inside water and give a prick in the stomach and bowel. If I see air bubbles rising to the surface, that goes with live birth. If the air bubbles are absent, that goes with stillbirth. ठीक है? So all these are 5 important tests. Potteries, Plockett's, hydrostatic, also called regates or flotation, Redin's and Breslau's second life test. अब देखो स्नेक बाइट से कितनी इंटेंसिटी है क्वेश्चंस पूछने की आपके से, सीधे इंटेंसिटी। ये 2-3 क्वेश्चन हो गए। अभी रिसेंटली एक और क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोटॉक्सिक, आंसर वाज गोइंग विथ कोबरा, या कोबरा वेनम इज विच ऑफ विच टाइप, इट हैज टू बी न्यूरोटॉक्सिक। इसका आंसर क्या होगा? पेशेंट इज ब्रॉट टू कैजुअलिटी विथ हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट। मतलब आपको एग्जाम में क्या फीचर्स दिखा रहे थे? फरोइंग ऑफ फॉरहेड, जो कि हमें देखना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ अ न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट। पूछा जाएगा ना जिस दिन एग्जाम में, उस दिन खुश हो जाओ। टोसिस तो पढ़ते ही रहते हैं ना, बट टोसिस से पहले कौन सा फीचर आता है एज पर MOHFW गाइडलाइंस? फरोइंग ऑफ फॉरहेड। फरोइंग बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है ना, स्नेक बाइट के केस में सबसे पहले फरोज बन जाते हैं, उसके बाद टोसिस। ठीक है, तो ये फरोइंग ऑफ फॉरहेड इज फॉलोड बाय टोसिस। टोसिस भी दिख रहा है, दैट गोज विद न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स। द मोमेंट यू सी न्यूरोटॉक्सिक स्नेक, द आंसर गोज विद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। सांप देखने की जरूरत भी नहीं है, इमेज से ही क्लियर है कि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है। वैसे अगर ऐसा ब्लैक स्टीली कलर स्नेक दिखे ना, जिसमें और कुछ नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, कलर दिख रहा है ब्लैक स्टीली कलर, दिस गोज विद क्रैथ। द इमेज व्हिच वाज शोन टू यू इन द एग्जाम वाज एक्चुअली अ कॉमन क्रैथ। ऐसा रिलेटिव करते हैं एक्चुअली में, इंडिया में ना हॉस्पिटल्स में आजकल हो रहा है, लोग सांप को पकड़ कर लाते हैं कि डॉक्टर साहब ये रहा सांप। तो आप यूटिलाइज कर सकते हो ना, अगर आपको आइडिया है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन वैस्कुलोटॉक्सिक बाइट? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूरोटॉक्सिक में तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। वैस्कुलोटॉक्सिक बाइट में, वैस्कुलोटॉक्सिक बाइट में what is the most common cause of death? Hemorrhagic shock. The person dies of bleeding, uncontrolled bleeding from bite site or internal GI bleeding. The person dies of bleeding, hemorrhagic shock, bleeding from mucosal areas like oral bleeding, nasal bleeding, rectal bleeding. This goes with vasculotoxic, most common cause of death. What is the most common cause of death due to myotoxic bites? Musculotoxic means myoglobin proteins will be broken down. Muscle proteins like myoglobin will be coming out to the renal nephrons. They will try to come through our urine. They are big proteins and they have a tendency to damage the renal nephrons. So the most common cause of death in myotoxic bites is seen to be renal failure. तो ये तीनों मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हो गए तीनों स्नेक्स के। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स आर क्रैथ एंड कोबरा। वैस्कुलोटॉक्सिक ones are vipers, V for viper, V for vasculotoxic. Musculotoxic snakes are sea snakes. They produce a picture of rhabdomyolysis. Very good, Nias. Hyperkalemia is a feature of which of the following snakes? यही तीन ऑप्शन, न्यूरो, वैस्कुलो, मस्कुलो। Always remember, hyperkalemia mainly occurs due to breakdown of muscle proteins.
हाइपरकैलेमिया के लिए सिंगल बेस्ट आंसर क्या होगा? सी स्नेक, फर्स्ट आंसर ऑफ चॉइस। सी स्नेक ऑप्शन में नहीं है, देन यू कैन गो विथ क्रैप बाइट्स। सम ऑफ द क्रैप बाइट्स दे हैव अ टेंडेंसी टू शो टॉल पीक टी वेव्स इन द फॉर्म ऑफ हाइपरकैलेमिया अकरिंग इन द बॉडी। तो सी स्नेक पे एक क्वेश्चन फिर से एक्सपेक्ट करना, ठीक है, मोस्टली फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ सॉल्वेंट अब्यूज। अब ये वाला टॉपिक एफएमजी एग्जाम के लिए खासकर दे आर हाईली फैसिनेटेड टू आस्क। सॉल्वेंट अब्यूज में ये कौन सा मेथड है? द मोमेंट यू सी अ पॉलिथीन बैग बीइंग हेल्ड बाय सम पर्सन, द आंसर गोज विद बैग। द मोमेंट यू सी अ सैचुरेटेड क्लॉथ इन द हैंड, या फिर लाइंस ऑफ द क्वेश्चन में है कि सॉल्वेंट अब्यूज कैसे किया जा रहा है? सैचुरेटेड क्लॉथ से, योर आंसर गोज विद हफिंग। What is bleeding? Filling the room with a volatile agent and then taking deep respirations. अलग टाइप का नशा है, सस्ता नशा है, cheap नशा। What is sniffing? Taking the volatile substance vapors from the neck of a bottle. Sniffing nasal root से करते हैं। एक और मेथड होता है called dusting. This dusting, spraying the solvent directly over mouth and nose. Airways के ऊपर आपने स्प्रे कर दी। This method is called dusting. तो कौन कौन से मेथड्स हो गए सॉल्वेंट अब्यूज के? टैगिंग, डस्टिंग, ब्लीडिंग, हफिंग एंड स्निफिंग। अब इसमें नया क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकते हैं? अगर इसी टॉपिक से मान लो एग्जामिनर को फ्रेम करना है कि मैं एफएमजी एग्जाम में ये टॉपिक तो छोड़ूंगा ही, तो ही विल फ्रेम अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एजेंट यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सॉल्वेंट अब्यूज अक्रॉस वर्ल्ड ग्लोबली। मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर दिस सॉल्वेंट अब्यूज इज सॉल्वी, हमेशा याद रखें। ग्लेडिंग इज मोनीमाला ना, ग्लेडिंग इज फिलिंग द रूम विद द वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक एयर फ्रेशनर या कोई भी वोलेटाइल एजेंट से रूम को फिल किया एंड देन टेकिंग डीप रेस्पिरेशंस। कमरे को बंद करके पूरा फिल कर दिया एंड देन टेकिंग डीप रेस्पिरेशन, अलग टाइप का नशा है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू ऑब्ससीन टेलीफोन कॉल्स। अब ये क्वेश्चन देखते ही हिट करना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना है। एफएमटी के क्वेश्चंस ना यू कैन सॉल्व वेरी क्विकली इफ यू हैव रिवाइज्ड 2 times ना, यू कैन गेट इट डन नाइसली विथ 100% स्पीड एंड एक्यूरेसी। और 3 बार रिवाइज किया तब तो मतलब 100% यू विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू ऑब्सीन ऑब्सीन मींस डर्टी and the answer goes with scatologica. And I will recall that scopophilia, scoptophilia, voyeurism is also called peeping tom, and this is watching or capturing private moments of a female secretly, and it is a punishable offense in India under 354 CIPC. ठीक है, या तो ये सेक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपने सिनोनिम पढ़ रखे हैं वॉयरिज्म के, तो भी सॉल्व कर सकते, डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए। दैट स्कैटोलॉजिका गोज विथ टेलीफोन। आंसर कुछ नहीं दिख रहा है ना इमेज में, कुछ नहीं दिख रहा, शेप कुछ नहीं समझ आ रहा है, कलर तो समझ आ रहा है। यही बोलते हैं ना क्लास में, लोग पढ़ते हैं ना क्लास में, ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स द कलर ऑफ द क्रिस्टल। सीक्वेंस में कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन। टाकायामा में पिंक कलर। फ्लोरेंस में कैसा होता है? डार्क ब्राउन। बारबेरियोस में कैसा होता है? येलो। कलर तो हमें पता है, शेप भी रिवाइज कर लेते हैं। सीक्वेंस में शेप कैसा होता है? रोम्बिक। फ्लोरेंस में शेप कैसा होता है? रोम्बिक। ऑलमोस्ट सेम आउट। टाकायामा में शेप कैसा होता है? फेदरी। बारबेरियोस में शेप कैसा होता है? नीडल शेप। So TT tests are for red stain analysis and boyfriend tests are for semen, white stain analysis, that whether the sample is semen or something else. तो रेड स्टेन के लिए टीटी बैट वाले टेस्ट हैं, टीटी बैट रेड कलर का होता है, एंड बॉय में बॉयफ्रेंड टेस्ट होगा टू डिराइव whether the sample is semen or not. This is the way to revise. Hardly it will take 10 seconds, 20 seconds. And one question is sure. तो ये वाला जो और भी 2-3 बातें हैं जो रिवाइज हमेशा करनी है, स्टेन एनालिसिस। ठीक है, ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल टेस्ट के। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है बट कलर तो दिख रहा है ना, पिंक कलर। पिंक कलर केवल एक ही तो टेस्ट में आता है ना, पिंक कलर इज सीन इन ओनली वन टेस्ट, दैट इज टाकायामा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? टाकायामा, नथिंग एल्स।
A dead body comes with neck wound having clean cut margins, crushed tissues with vertebral bone disruptions. What type of wound is this? The moment I see clean cut margins, I will think of that the weapon used is a sharp edge weapon. Correct है ना? ऐसे ऐसे attempt करना है क्वेश्चन. ठीक है? The moment I say crushed tissues, अब मैं सोच में पड़ जाऊंगा. एक sharp edge weapon जिससे डैमेज हो रहा है, मतलब डीपर डैमेज, वर्टिब्रल बोन डिसरप्शंस हो रहे हैं, जबकि वेपन और कैसा होना चाहिए? शार्प मार्जिन के साथ, हेवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए. एंड अ हेवी शार्प एज वेपन यूजुअली प्रोड्यूसेस व्हिच इंजरी? चॉप वुंड्स. चॉप वुंड. चॉप. क्लीन कट मार्जिन देके एग्जामिनर ने आपको बताया कि इंजरी जो वेपन है वो शार्प एज्ड वेपन है. एंड द मोमेंट यू सी डीपर एक्सटेंसिव डैमेज, single best answer goes with chop wound. What is a chop wound? A wound produced by a heavy sharp edge weapon. Best example ऐसे weapon का क्या होगा? Axe या meat choppers. Axe या meat choppers. Heaviness की वजह से deeper extensive damage होता है, but जो skin पे wound है वो कैसा है? Clean cut margins. What type of wound is this called in total? Chop wound. Usually in wounds का ना breadth large होता है. क्यों? Because of the deeper extensive damage. It has to be chop wound. Laceration क्यों बोल रहे हो? क्लीन कट मार्जिन देखना है ना, इसको छोड़ना नहीं है. ये पूछा गया था उस टाइम जब कोविड था ना, और अगस्त सेशन में एग्जाम हुआ था. अगस्त एग्जाम वाज सेड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ना, उसमें ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया. नाइसली फ्रेम्ड क्वेश्चन. एंड हम लोग अपनी क्लासेस में ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि हैवी शार्प एज वेपन विल प्रोड्यूस अ इंजरी व्हिच विल हैव क्लीन कट मार्जिन विद डीपर एक्सटेंसिव डैमेज. एंड द वेपन बेस्ट एग्जांपल एक्स और चॉपर. गॉट इट? रॉटन एग ओडोर. अब ओडोर का टेबल वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड. रॉटन एग ओडोर गोज विद हाइड्रोजन सल्फाइड. आर्सेनिक का ओडोर कैसा होता है? आर्सेनिक का ओडोर होता है गार्लिकी. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड फिशी. फॉस्फाइड्स फिशी. परफेक्ट राइमिंग हो रहा है ना. चाहे जिंक फॉस्फाइड हो या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हो, फिशी. फॉस्फोरस का कैसा होता है? गार्लिकी. व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ गार्लिकी ओडोर? आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ओपीसीज एंड सल्फोस. Antidote to be used for iron poisoning. We all know antidote for iron poisoning is desferrioxam. ट्रांटीन कौन से पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं? इसका चिलेटर होता है, बताओ कौन बताएगा? ट्रांटीन एक्ट्स एज ए चिलेटर फॉर कॉपर. कॉपर. So to remove excess of copper from the body, we can use triantine with zinc, but the preferred one is penicillamine. And always remember, penicillamine is effective in which poisons? C for copper, L for lead, and M for mercury. M for mercury. Bal is indicated in which of the following? Answer is arsenic. Bal can be added with EDTA and can be used in lead poisoning. EDTA सबसे ज्यादा preferred किसके लिए होता है? lead poisoning के लिए. And Bal plus EDTA is used for severe lead poisoning case, जो कि अभी FMG एग्जाम में पूछा गया था. There is a case of lead encephalopathy. Which of the following chelators you will use? चलो आपको ऑप्शन देते हैं. बाल, दूसरा ऑप्शन है EDTA, तीसरा ऑप्शन है बाल प्लस EDTA. द मोमेंट यू सी दिस कॉम्बिनेशन इन द ऑप्शन अगर है तो ये आपका सिंगल बेस्ट आंसर होगा, लेड एनकेफेलोपैथी या सीवियर लेड पॉइजनिंग के लिए. मान लो ये ऑप्शन में ही नहीं है, देन यू शुड पिक EDTA एज योर सेकंड बेस्ट आंसर. तो बाल यूजुअली प्रेफर्ड होता है आर्सेनिक के लिए, और कहां कहां दे सकते हैं? लेड में दे सकते हैं. कौन से केस में? लेड एनकेफेलोपैथी में. मरकरी में भी दे सकते हैं, इनऑर्गेनिक मर्क्यूरियल पॉइजनिंग. तो तीनों मेटालिक जो इंपॉर्टेंट मेटालिक पॉइजन है उसमें इसका रोल. ठीक है. क्रॉनिक एल्कोहलिक, फिर से ये क्वेश्चन आएगा, फिर से आएगा ये क्वेश्चन. क्वेश्चंस पे ना कमांड होना चाहिए. INI-CET का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट पीजी का भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन. क्रॉनिक एल्कोहलिक कम्स टू कैजुअलिटी इन डिसओरिएंटेड स्टेट, एजिटेशन. सारे फीचर्स किसके दिखाएंगे आपको? एक्साइटेशन के. After 2 days of sudden alcohol withdrawal, and you will mark your answer as delirium tremens and you will move ahead. These are complications of alcoholism. Hangover
is a withdrawal feature but seen within few hours. 2 से 3 दिन के बाद यूजुअली क्या दिखता है? डिलीरियम ट्रेमेंस ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी एट न्यूरोट्रांसमीटर लेवल. एग्जैक्टली क्या क्या होता है इसके फाइंडिंग्स एंड ऑल वी हैव कवर्ड इन डिटेल. A person has committed a criminal offense. ऐसे फ्रेम करके आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम. Caught by police and later brought to a criminal court, but the court directs the police to transfer the case to juvenile courts. Juvenile courts are courts which deal with child who is in conflict with law. Who is a child who is in conflict with law? मतलब उस child ने कोई offense किया in law. Who is a child in India? Child is a person less than 18 years. मुझे इतनी बातें पता होनी चाहिए. Juvenile court deal with a child. Child is a person less than 18-year-old, and if it was proved that the accused is, ये जुवेनाइल कोर्ट में कब भेजा जाएगा? जब अक्यूज लेस देन 18 होगा. लेस देन 18 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. ठीक है ना? इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. चलो लेट अस मूव अहेड. फिर से वही क्वेश्चन, येलो कलर नीडल शेप. सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन गेटिंग आस्क्ड. दिस इज डन टू डिटेक्ट which stain. आंसर विल बी semen and nothing else. येलो कलर नीडल शेप क्रिस्टल बारबेरियस टेस्टिंग. आगे बढ़ते हैं. Farmer was brought to casualty with pinpoint pupil increased secretions, garlicky odor. Which drug to be used by the doctor for treatment? एक समय में क्या पूछा था? Farmer has come with increased secretions, pinpoint pupil. What will be your diagnosis? Single best diagnosis. Answer was going with OBCs. OBCs का एंटीडोट क्या होगा? गार्लिकी ओडोर भी OBCs में मिलता है. Increased secretions in the form of sludge, pinpoint pupil, all point toward OPC poisoning. Antidote goes with atropine. Oximes can be used before aging of the enzyme has occurred. Gutter fracture of the skull bone is associated with impact by. Gutter fracture is associated with bullet injuries, tangential bullets. कौन सा? Angled bullet. Angled bullet. या tangential बोलते हैं. When the bullet has just taken up part of the outer table and produced a gutter in the skull bone. That goes with angled bullet. Actual में होना चाहिए tangential bullet injuries. बाकी options usually gutter fracture के लिए नहीं जाते. तो इसलिए बुलेट भी दे रखा है तो दैट विल गो विथ गटर फ्रैक्चर. सिंगल बेस्ट आंसर. In an unconscious patient with head injury requiring emergency surgery, if there are no relatives to give the consent, the doctor should. According to 92 IPC, as a doctor, we have got this privilege in law. This 92 IPC says you can operate even without consent in this scenario. So exactly 92 IPC was asked. Next time they can ask you, the doctor can operate without consent as per which section of law? 92 IPC to be always remembered. This is a patent question asked in all the exams. हिस्ट्री आपको देंगे अननोन पॉइजनिंग का, फिर आपको देंगे बग्स लाइक फीलिंग. जैसे ही बग्स लाइक फीलिंग देखोगे तो क्या रिकॉल होगा? कोकेन बग्स. Why bugs like feeling occur? Because cocaine is the only local anesthetic which is vasoconstrictor. Because of this vasoconstrictor feature, what usually happens in chronic abusers is vasoconstriction of the cutaneous blood vessels gives rise to bug like feeling called as cocaine bugs or Magnum symptoms. वो किसमें देखा जाता है? chronic abusers. अब पेशेंट का सब कुछ बड़ा होगा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बेसिकली सिंपैथोमिमेटिक फीचर्स होते हैं. सिंपैथोमिमेटिक फीचर्स होते हैं. ऐसे हमें याद रहेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब बढ़े रहेंगे. Which poisoning should the doctor suspect? Always cocaine. बाकी तो ऑप्शंस फिट भी नहीं बैठते. According to MTP Act 2021, abortion is legally allowed up. यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी. बट सपोज एक दूसरा ऑप्शन है, एट एनी एज. क्या ये आपका बेटर आंसर हो जाएगा? हो जाएगा. अबॉर्शन इज लीगली अलाउड इवन बियॉन्ड 24 वीक्स इफ देयर इज सीरियस रिस्क टू फीटल लाइफ. तो यहां पर मेरा आंसर शिफ्ट हो जाए. इन दिस क्वेश्चन द आंसर, बेस्ट आंसर गोज विद 24. नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं, ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं टू कंफ्यूज. एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेल्स. मेल्स में इस चीज को क्या बोलते हैं? सटायरियासिस. एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल्स, इसको बोलते हैं निम्फोमैनिया. ये तो सबको पता है. ये था क्वेश्चन. मैंने बोला ना ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, कभी वन लाइनर बना के, कभी एकदम लेंथी क्वेश्चन बना. टॉक्सिसिटी ऑफ वेनम ऑफ किंग कोबरा. किंग कोबरा इज अ कोबरा
किंग लोग क्या पहनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस। कॉमन लोग क्या पहनते हैं? चश्मा। तो कॉमन कोबरा के नेक के ऊपर क्या होता है? चश्मा। चश्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल शेप मार्क। कॉमन कोबरास का आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है? स्पेक्टेकल मार्क, यूजुअली ऑन द बैक ऑफ नेक। ये स्पेक्टेकल मार्क किंग कोबरा में नहीं होता। किंग लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किंग कोबरा में कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है। दिस इज अ वे टू रिमेम्बर। ठीक है, तो इनका वेनम कैसा होगा? न्यूरोटॉक्सिक। A dead body was brought for autopsy. Odor in such case will be. ऐसे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पोस्टमार्टम चेंज है। दिस इज अ पार्शियल मॉमिफिकेशन ऑफ द हेड एरिया, मेनली दिस एरिया, हेड एंड नेक एरिया, एंड यहाँ भी पार्शियल मॉमिफिकेशन हुआ है। So this goes with mummification change. And mummies are odorless. Why? Because they occur due to drying of body tissues when the dead body was lying in an open area and the climate was hot and dry. तो जब hot and dry climate exposure होगा, तो obviously the dead body won't have any odor, and the best answer goes with odorless. So these are the two images which should be there with us. This goes with adipocere formation. दिस गोज विथ मम्मीफिकेशन। एडिपोसियर का ओडोर कैसा होता है? अमोनियकल ओडोर, अमोनिया लाइक ओडोर, अमोनियकल ओडोर बोलते हैं। तो देख रहे हैं ना पोस्टमार्टम चेंजेस से क्वेश्चंस। तो पोस्टमार्टम चेंजेस को अच्छे से रिवाइज करना है, एज वी हैव कवर्ड इन आवर क्लासेस। और बाकी ओडोर्स तो वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड। बिटर एलमेंट, साइनाइड्स, बर्न्ट रोप, कैनाबिस। Another question. See the intensity of asking questions from rigor mortis and cadaveric specimen. Body was recovered within few minutes of death and following condition was noted. They showed you clenched fist. This is commonly associated with cadaveric spasm and nothing else. Mark the answer and move ahead. सुसाइड होमिसाइड नहीं बता सकते, ठीक है। कैडावरिक स्पैज्म से केवल ये बताते हैं कि आदमी जिंदा था। He was making some struggle as a result of which loss of ATPs have occurred in one group of us. A 40-year-old patient, अब ये भी एक पेट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आता है एफएमजी एग्जाम्स में इन पर्टिकुलर। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स। दूसरा स्पेशल क्वेश्चन कौन सा है? टॉक्सिकोलॉजी से सॉल्वेंट अब्यूज। ये दो स्पेशल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में यूजुअली आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सस्पेक्टेड? अगर आपको क्या क्या दिख रहा है एग्जाम में, यूजुअली देते हैं लैक्राइमेशन, डायरिया, कंजेस्टेड आइज, साथ में कभी कभी यॉनिंग भी लिखा होता है, साथ में कभी कभी राइनोरिया भी लिखा रहेगा। एक पेशेंट आया, मान लो ये फीचर्स लेकर, ऑफ रनिंग नोज, लूज टूल्स, लैक्राइमेशन, कंजेस्टेड आइज, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन। व्हाट यू विल थिंक ऑफ कि ओपियम पॉइजनिंग का विड्रॉवल केस लग रहा है। क्यों? क्योंकि टेकिकार्डिया हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। नाउ यू विल थिंक टुवर्ड्स ओपियम विड्रॉवल एंड खोजोगे कि ओपियम विड्रॉवल है, ऑप्शन में है। दिस इज गोइंग टू बी माय। यूजुअली ओपियम की जगह ना आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या दे देते हैं? हेरोइन विड्रॉवल। इसमें कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हैं। हेरोइन क्या होता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। दो एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं तो वन ऑफ द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होता है फ्रॉम मॉर्फिन। मॉर्फिन, कोडीन एंड थीबेन आर नेचुरल ओपोइड्स। बाकी जितने ओपोइड्स हैं दे आर सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। हेरोइन इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक ब्राउन शुगर, नॉट ब्लैक शुगर, ब्राउन शुगर और स्मैक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओपोइड ग्रुप का कोई भी एजेंट दे देंगे जो ड्रग ऑफ अब्यूज की तरह यूज होता है, तो टिक करना है योर आंसर। तो ओपियम में पॉइजनिंग अगर होती है, मान लो ओपियम पॉइजनिंग, तो हमें पता है ना देयर व्हाट अकर्स। पॉइजनिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, ओपोइड पॉइजनिंग या ओपियम पॉइजनिंग देखे, हमें याद रखना है। ओपियम पॉइजनिंग का केस में ट्रायड क्या होता है? कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड मियोसिस। And what will be the treatment of choice for opium poisoning? Treatment of choice will remain IV naloxone. कई बार ये ऑप्शंस में नहीं होता, तो नैलक्सॉन की जगह आपको ऑप्शन में क्या दिखता है? नैल्मीफिन। मेंटेनेंस कैसे करते हैं? बाय गिविंग अ ओरल ड्रग। ओरल नैलट्रेक्सोन से मेंटेनेंस करते हैं। नेवर मार्क नैलट्रेक्सोन एंटीडोट और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओपियम। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। A person has come in comatose state. The doctor noted respiratory depression, meiosis in the person. Which antidote you will prefer?
IV naloxone, पहले डायग्नोसिस बनाना होगा ना, तब ना एंटीडोट बताओ। फाइंडिंग इन द इमेज इज सजेस्टिव ऑफ, एक एग्जाम में ये पूछा गया आपके LSCS का स्कार सॉर्ट ऑफ दिखा के पूछा गया क्या है, तो इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि ये LSCS का स्कार है। अब इस ऐसे क्वेश्चन में ना डरना नहीं है कि पता नहीं ऐसा ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी पूछ, ठीक है ना, आप खुश रहो, ऐसे क्वेश्चन से तो खुश होना चाहिए ना। बट हाँ, अगर आपको मान लो टैटू दिखा रहे हैं, किसी का टैटू दिखा रहे हैं ऐसे, तो उसको स्कार मार्क नहीं लगाओगे ना, अब टैटू दिखा रहे हैं तो टैटू लगाओगे, जो दिखाया जा रहा है वो लगाना है। मोल दिखा रहे हैं, ब्लैक मोल दिखा रहे हैं, तो उसको मोल लगा दो, दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन ना। ये सारी चीजें किसमें हेल्प करती हैं, आइडेंटिफिकेशन में। टैटू मार्क्स, मोल्स प्रेजेंट ओवर राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, दीज आर आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया। अब यहाँ पे लैगेचर मार्क तो होगा ही नहीं ना, ये देख रहे हो ना, प्यूबिस रीजन है, यहाँ पर लैगेचर मार्क कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे ही फॉल्स है, फॉल्स ऑप्शन। Inquest in case of death in police custody is done by, this was the question which I was talking about, बताओ इसका आंसर क्या होगा। Inquest in case of death in police custody, ideally the option should be judicial magistrate, but executive magistrate कब कर सकते हैं, when the death has occurred due to natural causes, so yes, B will be my best answer of choice. Just before death, a person made efforts to save himself, which led to contraction of one group of muscles and primary relaxation was absent. What is true about this? See the way of asking question. They are so fond of rigor mortis and cadaveric spasm. Ask her iska cadaveric spasm, and here the answer goes with cadaveric spasm. अब इसके सिनोनिम भी याद रखना, हो सकता है ना नेक्स्ट टाइम cadaveric spasm ऑप्शन में ही ना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैटालेप्टिक रिजिडिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। क्योंकि ना समटाइम्स राइगर मोर्टिस को बुलाया जाता है कैडावरिक रिजिडिटी। कैडावरिक रिजिडिटी इज राइगर मोर्टिस, कैडावरिक स्पैज्म इज कैटालेप्टिक रिजिडिटी। सी द डिफरेंस। अगर किसी को प्ले करना होगा ना टू कंफ्यूज यू, दिस इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ प्ले। रिजिडिटी तो कॉमन है दोनों, ऑप्शन ऐसे बनेंगे तो कंफ्यूज नहीं होता, इसीलिए कैडावरिक स्पैज्म को समटाइम्स एक और नाम से बुलाया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस राइगर मोर्टिस, इंस्टेंट राइगर मोर्टिस, ये सिनोनिम भी आता है। एल्गर मोर्टिस क्या होता है, कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी। लिवर मोर्टिस क्या होता है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, सजिलेशंस, पोस्टमार्टम लिविडिटी, पोस्टमार्टम हाइपोस्टैसिस, पोस्टमार्टम एकाइमोसिस, बहुत सारे सिनोनिम्स है, कोजिटेशन, विबिसिस, डेथ स्पॉट्स, डार्कनिंग ऑफ डेथ, हो गए सारे सिनोनिम का। सेशन के स्टार्टिंग में हमने कवर किया ना मैकनॉटन्स रूल का जिस्ट थी, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, पूरा का पूरा मैकनॉटन्स रूल लिख के और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है, तो इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है कि दिस इज व्हाट इज मैकनॉटन्स रूल। स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, study of death in all its aspect, this is what is called thanatology, this is what is called thanatology। Disinterment is another name for, disinterment is another name for exhumation, exhumation, exhumation means taking out a buried dead body, ex means out of, humans means mitti, out of humus, out of mitti, किसको निकालेंगे, डेड बॉडी को, to do re-postmortem whenever some new facts have come into existence। cherry red PMS, cherry red PMS is associated with carbon monoxide। हाइड्रोजन सल्फाइड में कैसा होता है, ये भी रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन। फॉस्फोरस में कैसा होता है, फॉस्फोरस में होता है डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन पीएमएस। हाइड्रोजन साइनाइड में कैसा होता है, ब्राइट रेड या ब्रिक रेड। तो हमें वो टेबल याद रहनी चाहिए जो हम लोगों ने अपनी क्लासेस में कवर किया, कलर्स ऑफ पीएमएस ना। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो यही दोनों है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, दे आर रिपीट क्वेश्चंस ऑफ एफएमजी एग्जाम्स इन पर्टिकुलर। Police recovers beheaded skull bone and relatives of a missing person give the photograph of the missing person to police. These two samples can be analyzed. मतलब कौन कौन से सैंपल्स हो गए, स्कल बोन एंड फोटोग्राफ ऑफ अ मिसिंग पर्सन, इसको मैच कराना है थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज व्हाट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। तो इन दोनों के
नेगेटिव्स बना के कंप्यूटर उनको सुपर इम्पोज करता है. सो देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन लाइक ओनियन, नाजियन, नाथियन, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. तो उनको कंप्यूटर क्या करता है, मैच कराता है. ऐसे टेक्निक को क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन. व्हाट इज चिलोस्कोप, स्टडी ऑफ लेफ्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. The other synonyms of fingerprinting method of identification, dactylography, also called as dermatoglyphics, also called as Galton system of identification, because it was Galton who systemized this method of identification. Who discovered fingerprinting? It was discovered by William Herschel. William Herschel. Which of the following is not a blood stain analysis test? बॉयफ्रेंड टेस्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो इसको रूल आउट कर लो. ठीक है, तो रूल आउट कर लो. बाकी देखो, टीकमैन्स माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल टेस्ट है, ये भी माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल टेस्ट है. स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट और मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट टू टेल कि सैंपल ब्लड है, नथिंग एल्स. क्यों? बिकॉज वी गेट डिफरेंट बैंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स. तो यहाँ पर आंसर ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, बारबेरियस. दिस इज नॉट अ ब्लड स्टेन एनालिसिस. ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था जो अभी रिसेंटली पूछा गया एफएमजी एग्जाम. फिर से आ गया ना उनका फैसिनेशन टुवर्ड्स कोकेन पॉइजनिंग. दे हाथ में वर्ड क्या ऐड कर दिया, अक्यूट कोकेन पॉइजनिंग. द मोमेंट यू सी अक्यूट कोकेन पॉइजनिंग, तो आपको क्या याद आएगा कि ये जो कोकेन बग्स है और मैग्नन सिम्टम्स इनको बुलाया जाता है ऑन द नेम ऑफ अ फ्रेंच साइकेट्रिस्ट का नाम था मैग्नन्स. का नाम है, एक नाम का एक पार्ट में मैग्नन भी था, फ्रेंच साइकेट्रिस्ट का नाम, जिसने ये सब डिस्कवरी करी थी. Magnan symptoms is based on the name of the person. Magnan symptoms, cocaine bugs, is also called formigation symptoms, where usually these patients have a tactile hallucination as if insects are crawling. तो ये सब कब मिलता है, क्रॉनिक में मिलता है. मैं इसको आंसर मार्क कर दूँ, भले ही मुझे एबीसी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बट यस वी शुड नो दैट यस कोकेन पॉइजनिंग में दो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, दैट दिस इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक व्हिच इज vasoconstrictor, as a result of which it can give rise to acute coronary spasm. It can lead to nasal septum perforation. एंड सारी चीजों को ब्लैक ब्लैक कर सकते हैं, जैसे कि टंग को ब्लैक कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसके एक प्रिपरेशन को क्रैक बोलते हैं ना, स्मोकिंग फॉर्म ऑफ कोकेन इज कॉल्ड क्रैक. तो ऐसे लोगों में जो कोकेन पॉइजनिंग कर रहे हैं उनके लंग्स में इंफ्लेमेटरी चेंजेस मिलते हैं, तो बोलते हैं क्रैक लंग. फिर उनके थंब पे ऐसे क्लोसिटीज मिलते हैं, उसको बोलते हैं क्रैक थंब विद कोकेन पॉइजनिंग. ठीक है, नेजल सेप्टम परफोरेशन, ब्लैक टंग, ये सब जाता है कोकेन पॉइजनिंग के लिए. यूजुअली द पर्सन, ऐसे लोग क्यों कंज्यूम करते हैं, लोग क्यों कंज्यूम करते हैं कोकेन, बिकॉज इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. साथ में सिंपैथोमिमेटिक होता है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कराता है, एंड इट गिव्स राइज टू टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड एंड फीट. पीपल्स डायलेट होते हैं, कोकेन इज अ डायलेटर. बाकी हमें पता है कि हाइपरटेंशन कराता है, हाइपरथर्मिया कराता है. हाइपरथर्मिया करा रहे तो स्वेटिंग होगा. कोकेन ऑल्सो लीड्स टू हाइपरथर्मिया. तो कोकेन क्या कराता है, जस्ट लाइक एट्रोपिन, इट लीड्स टू कोकेन फीवर. पता, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिलेशन टू कोकेन पॉइजनिंग. होमिसिडल स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज कॉज ऑफ डेथ इन. ये क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम में कैसे आया, एक स्टोरी बना के, टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग विद ईच अदर. वो क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है ना ऑलरेडी, नीट पीजी सेशंस में, वन शॉट सेशन. तो होमिसिड, ये तो हमारे नोट्स के लाइन होते हैं. दोज हु हैव अटेंडेड माय क्लासेस ना, दिस इज द लाइन ऑफ द नोट्स. होमिसिडल स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज नोन एज बर्किंग. एंड अगर होमिसिडल की जगह एक्सीडेंटल वर्ड लगा दें, accidental smothering and traumatic asphyxia is known as overlaying. Overlaying. What is Bansdola? Bansdola is strangulation by bamboo sticks. Bamboo sticks. What is mugging? Strangulation by bend of elbow, bend of knee, sole of foot. What is garroting? Here the strangulation is done by iron collars. IRON alphabets आपको garroting में मिलेंगे. The strangulation is done by iron collars, and this is also sometimes referred to as Spanish windlass technique. What is Spanish windlass technique? One of the types of garroting called as Spanish windlass technique. और किसी टाइप का strangulation रह गया, manual. Manual is also called throttling. Throttling is done by hands.
Ligature strangulation में strangulation is done by ligature material. Anything which can be used as a ligature material. Story of Burke and Hare you all are aware of. इसका आंसर क्या होगा? पेशेंट हैज डाइड ड्यू टू एमआई, व्हिच स्टेन इज यूज्ड एट ऑटोप्सी. देखा, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं. ये नाम याद हमेशा रखना, इन्फरेंस भी याद रखना. अगर हार्ट स्लाइसिस को हमने डिप किया है एंड कुछ एरियाज ब्राइट रेड रह रहे हैं, तो यहाँ पर एलडीएच एक्टिविटी इज प्रेजेंट, so TTC is converted into red color formazine compound. Why? Because the enzyme activity is present. Which enzyme? LDH activity, which converts this TTC into red color formazine compound. कुछ एरियाज अगर पेल येलो रह जा रहे, there leakage of enzyme has occurred, and लीकेज ऑफ एंजाइम की वजह से वो एरियाज नॉन वायबल हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे या इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो रेड कलर फॉर्मेशन कंपाउंड नहीं बनता, तो वो पेल येलो रह जाता. इट हैज टू बी ट्राइफेनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड एंड नथिंग एल्स. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अभी पहले कैसे क्वेश्चन पूछते थे आपके एग्जाम में? डायरेक्ट एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजन. अब देखो तरीका, देखो उसी क्वेश्चन को, अ चाइल्ड हैज कंज्यूम लॉट्स ऑफ आयरन टैबलेट, फिर आपको फीचर्स दे दिए, पेन एब्डोमेन, प्रोफाउंड जीआई ब्लीडिंग एपिसोड्स कराता है इन द जीआईटी स्टेट विच लास्ट फॉर फर्स्ट 0 to 6 hours. व्हाट इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट? डेस्फेरिऑक्सामिन. डेस्फेरिऑक्सामिन मिसाइलेट, आप सबको पता है. So this covers our all the questions. Now is the time to cover those images na which I told you I'll be covering. Just give me one second. चलो ये बताते जाओ कौन सा मेथड ऑफ डेंटल चार्टिंग है. Which method of dental charting is this one? Answer goes with, this is what is called universal Cunningham method. Universal Cunningham method. So this is for temporary teeth, this is for permanent teeth. So temporary में 20 teeth होते हैं. We start from right upper quadrant. We go in a clockwise manner for upper jaw, and again we follow that clockwise manner for lower jaw. So alphabet से denote करते हैं 10 teeth of upper jaw. A to J for upper jaw and K alphabet से लेके T alphabet for lower jaw. परमानेंट डेंटिशन में ये कैसे चेंज हो जाता है? 1 to 16 नंबर यूज करा, 1 to 16 फॉर अपर जॉ एंड लोअर जॉ के लिए 17 to 32. यहाँ भी ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होता है चार्टिंग में हमेशा. ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल कनिंघम मेथड. दिस इज व्हाट इज पाल्मर्स मेथड. पाल्मर्स मेथड ऑफ चार्टिंग. जॉ को डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. टेम्परेरी के लिए 5 टीथ होंगे ना हर क्वाड्रेंट में, 2 1 0 2. ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 क्या हो गया? प्रीमोलर्स. ये 2 क्या हो गया? मोलर्स. 2 1 0 2. तो ये पूरा फॉर्मूला एप्लीकेबल. यहाँ पर 2 1 2 3, मतलब ये दो क्या होंगे? इंसाइजर्स. ये क्या होगा? सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर हो गया. उसके बाद कनाइन. फिर 4 and 5 विल बी प्रीमोलर्स, 6 7 8 विल बी मोलर्स. ऐसे करके जब नंबर्स यूज करा क्वाड्रेंट डिवाइड करके, तो ये हो गया परमानेंट टीथ का नोटेशन. साइड कौन सा होगा? ये हमेशा राइट, ये हमेशा लेफ्ट, ये हमेशा राइट, ये हमेशा लेफ्ट. दिस इज पाल्मर्स मेथड ऑफ चार्टिंग. क्यों दिखा रहा हूँ ये? क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, फील हो रहा है कि आ सकता है, क्योंकि पीजी एग्जाम्स का तो रिपीट क्वेश्चन है ये वाला इमेज खासकर. दिस इज अ मेथड ऑफ चार्टिंग कॉल्ड हेडर अप मेथड ऑफ डेंटल चार्टिंग, वेयर प्लस साइन इज यूज्ड फॉर अपर जॉ, माइनस साइन फॉर लोअर जॉ. दोनों मेथड्स के लिए, दोनों टीथ के लिए, परमानेंट या टेम्पररी के लिए, हेडर अप ने क्या बोला? आई विल यूज नंबर्स. एक डिफरेंस रखने के लिए 0 बिफोर द नंबर मेक्स द टीथ टेम्पररी. ठीक है, सिंपल. आगे बढ़ते हैं. आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, भी बताऊंगा क्या क्वेश्चन है. पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन. फ्रॉम दिस मेथड ऑफ डेंटल चार्टिंग इज कॉल्ड एफडीआई मेथड. एफडीआई फॉर फेडरेशन ऑफ डेंटियर इंटरनेशनल. So start from permanent teeth, write 1 2 3 4 in a clockwise manner and make them. जब वो चार्टिंग, जब वो जॉ को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, तो उस समय क्या करना है? 1 को क्या बनाना है? 11, 2 को 21, 3 को 31, 4 को 41. परमानेंट टीथ में कितने टीथ होते हैं हर क्वाड्रेंट में? 8 टीथ. 11 को एक एक ऐड करते जाओ.
टू डिनोट 8 टीथ इन एवरी क्वाड्रेंट। ये साइड तो हमेशा राइट होता है, ये साइड हमेशा लेफ्ट होता है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्या था, ओल्ड क्वेश्चन, गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 33 नंबर टीथ अकॉर्डिंग टू एफडीआई मेथड। अब 33 नंबर टीथ कौन सा है? अगर मुझे पता है कि 1 2 3 4, 3 कहाँ किधर आएगा, मेमोरी में रिकॉल करना है ना, 1 2 3, 3 किधर आएगा, लेफ्ट साइड। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, लेफ्ट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो कौन सा टीथ हो गया ये, लेफ्ट लोअर। 1 2 3 4 इज यूज्ड फॉर परमानेंट टीथ। कौन से टाइप का डेंटेशन हुआ, परमानेंट। थर्ड टीथ कौन सा होगा, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, उसके बाद थर्ड वाला कौन सा होगा, कनाइन होगा। इट हैज टू बी कनाइन। ये था कंप्लीट आंसर। कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करना है, ऐसे माइंड में देखो, ये सारे क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व करने ना, विदाउट एनी स्टेशनरी। तो ये क्वाड्रेंट बनाया हमने एफडीआई मेथड में, 1 2 3 4, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। 1 को क्या याद रखना है, 11, 2 को 21, 3 को 31, 4 को 40, 33 पूछा जा रहा है ना, तो 30 कौन सा हो गया, कनाइन हो गया। ये तुमने निकाल लिया ना। 1 2 3 4 तुम्हें पता है परमानेंट के लिए, परमानेंट भी निकाल लिया। हो सकता है कि इसी से आंसर सॉल्व हो जाए, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 मतलब 2 एंड 3 कौन से साइड के टीथ है, लेफ्ट साइड, है ना। हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं। एंड 1 2 3 विल बी, 3 विल ऑलवेज बी लोअर साइड। अब इसी को आगे बढ़ाना है, इसी साइकिल को। एंड फॉर टेम्परेरी टीथ ऑलवेज रिमेंबर 5 6 7 8 अगेन इन अ क्लॉकवाइज मैनर। क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट अपर क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर 5 को बना दो 51, 6 को बना दो 61, 7 को 71, 8 को 81। नेक्स्ट टाइम मान लो क्वेश्चन पूछा गया, गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट 73 नंबर टीथ, तो आपको यू विल बी ना पोजीशन ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 73, 73 मतलब टेम्परेरी हो गया ना। अब आंसर तो वैसा ही रहेगा, लेफ्ट लोअर, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, टेम्परेरी का नहीं। अब इट इज क्लियर नाउ, होने वाला। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एंड एवरी टीथ गेट्स अ यूनिक नंबर, दैट इज व्हाई दिस इज सेड टू बी द ओवरऑल द बेस्ट मेथड ऑफ डेंटल चार्ट। तो इसमें बस एक चीज याद रखना है, परमानेंट से स्टार्ट करना, ठीक है, परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट में 1 2 3 4, एंड 4 के बाद ही तो 5 आ रहा है ना, 5 6 7 8 इन अ सीक्वेंशियल वे। स्टार्ट फ्रॉम राइट अपर क्वाड्रेंट। So this covers our all the important dental charting images. I hope this session was useful to all of you. Any queries from the subject or from whatever we have covered? And best wishes तो आप सबके लिए हमेशा होती हैं. I'll be praying for you all कि आप सब लोग अच्छा करें एग्जाम. That is a wish which every teacher has for his or her student. वो wish हमेशा रहेगी. Not to worry. And all the very best for your exams coming. And confidence should be very very high. That yes, I will be doing it. I will be doing it. कोई नहीं रोक सकता कि आपने मेहनत करी है ना, तो रोक कौन लेगा। रुकते वो लोग हैं ना, जब अच्छे से या तो पढ़ो ना और फिर रिवीजन भी मत करो। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से रिवाइज करा हुआ है, one can stop you from achieving what you deserve. Always remember that fact. And already you are going to be a capital T small r before your name. Have that spirit that yes, you are going to be a doctor, and that should give you a confidence कि नहीं मुझे करना है. Yes, Shubham, I will share. ग्लास लेने की इच्छा है, ग्लास में पानी भी पी लिया जाए, प्यास भी लग गई. आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ इन द डीबीएमसीआई टेलीग्राम. Not an issue, and I'll be sharing it right now once I end the session.
चलो जी, बाय बाय, बाय बाय, see you all in later classes. So I'll be sharing the PDF, not to worry.